heart and soul into the court in every case which they take. Right now, they will be putting everything in this beautiful green ground, not in black and white this time, but some wonderful, colorful clothing of cricket. So we are about to start. We're just waiting for the umpires and the scorers to get ready. Let me update. Let me update with the players from Yashpal Thakur's team. Bhavesh Thakur, Rahul Mahadik, Aditya Kadam, Janardhan Dalfe, Atharva Jagtap, Ashwin Asunrasa, Govind Solanke, Ashok Avhad, Kranti Singh Gadre, Vijay Yadav, Shivam Dubey, Raj Kapadia, Arjun, Mahesh, and Rishabh. Let me tell you, some of them have come from right away from Virar, some of them have come from Pain, some of them have come from all different pockets of Mumbai. In fact, even from outside Mumbai to play this fantastic tournament. The lawyers in the court are going to put their case on the ground right now. We're just waiting for some technical glitches to be taken care of, and we'll have the first match started right. So the first ball right on the spot. Great line, great length, right speed. The pace was fine, the line was fine, the length was fine. Only thing missing was backwards batsman's footwork. So you can take some leverage because these are not professional players who are playing. These are the lawyers who have been really good in their work at in the court. Right now, this is their first love. The ball kept a bit lower. Expect some dampness in the wicket because it's early morning. So the wicket was slightly damp as you would see, and the ball is going to keep a little low. There hasn't been any seam or movement so far. No seam, no swing right now. The ball is going straight to the wicket keeper, but there would be a variation in bounce as there would be some moisture in it. There is a heavy layer of covering of ground on the wicket.
That would help the bowlers initially. But once 4 overs go on, it's going to be a beautiful batting paradise. Again, no footwork, the back foot just getting planted, trying to play away from the body. The only players who can do that very well were Abhishek Sharma and Virendra Sehwag. Virendra Sehwag in the past and Abhishek Sharma, they do not rely on their footwork much. They rely on their hand-eye coordination. Abhishek Sharma has much better technique, but Virendra Sehwag was the one who used to just use his hands to do the job. His footwork was minimal, but he was one of the best opening batsmen ever. Forget about India, about the world. Let's see, with less footwork, this batsman can get some maximum runs for his team. We are waiting for the first run still. Still no footwork, no movement. It is always said if your feet don't move, the runs and the scoreboards is never going to move. So no footwork, no runs being scored. 4 balls, 4 dot balls. The ball is doing the right thing. He's just putting the ball outside the off stump, keeping the right line in length, not doing anything different, keeping it straight and simple. KISS, keep it straight and simple. So he's keeping it straight, keeping it simple, not trying to do anything else. Oh, this is the first time he tried to go for that big booming cover drive, wasn't able to connect. So 5 dot balls. First 3 balls, he was trying to stay slightly away from the ball. The fourth ball he tried, and this one he tried to go for that big booming cover drive. Fantastic first over. This has been a very good start by the bowler. Sanjay Yadav and Mahesh Matre. Surya Kumar Yadav stays in Chembur. Ayush Matre is from Virar. But this Yadav and Matre are from Team Bandra. That's the first run of the MAPL Season 1. So the score at the end of over number 1 is exactly 1 run. So 1 for 1, in fact, one without loss at the end of 1 over. So Mumbai Advocates Premier League, it's going to be Santacru versus Bandra. The two owners are here, the two captains are here, and it's a fantastic start by the bowler. थोडा इथे आवाज कमी करा ना, सगळ्या कॉमेंट्री मध्ये लाईव्ह केलं ना. In fact, विजय यादव स्ट्राईकवर असेल. विजय यादव अ, अतिशय अप्रतिम गोलंदाजी. या गोलंदाजाने आतापर्यंत मात्र एकच धाव खर्च केली आहे आणि प्रत्येक चेंडू अगदी योग्य टप्प्यावर टाकलाय. प्रत्येक चेंडू ऑफ स्टंपच्या बाहेर ठेवलाय, किंबहुना चौथ्या पाचव्या स्टंपवर ठेवलाय. आणि शिस्तबद्ध गोलंदाजी, हा एकांत्र असा चेंडू होता, तो अगदी शरीराच्या थोडासा जवळ होता. तो चेंडू लेगच्या दिशेने मारण्याचा प्रयत्न फलंदाज करू शकला असता, परंतु अतिरिक्त असलेला ती मिळालेली उसळ, त्यामुळे तो फलंदाजाला तितकासा चांगल्या पद्धतीने खेळता आलेला नाहीये. म्हणजे त्याला वेगही मिळतोय, त्यासोबत चांगली उसळ देखील त्याला प्राप्त होते. हा, चांगला प्रयत्न, फलंदाजाचा चांगला प्रयत्न. हिंदीमध्ये म्हणतात ना, मुंबई की भीड में धक्का और मॅच में चौका छक्का लगणं जरुरी आहे. चौकार आणि षटकारांची गरज असते आणि तो प्रयत्न होतोय. तुमची टेक्निक किती चांगली आहे, तुम्ही किती चांगले फलंदाज आहात, तुम्ही किती छान पद्धतीने खेळू शकता, T20 क्रिकेटमध्ये याचं काहीच जागा नाही आहे. इथे तुम्ही धावा कशा जमा करताय ते महत्वाचं आहे, धावा किती जमा करताय ते महत्वाचं आहे किंबहुना. तर आतापर्यंत एकही चौकार आलेला नाही. कव्हरच्या दिशेने चौकार येणं मुश्किल आहे, पण स्क्वेअर लेगच्या दिशेने, फाईन लेगच्या दिशेने हा हलक्या हाताने खेळून जरूर काढलाय. टायमिंगचा खेळ आहे. क्रिकेट पॉवरचा जितका खेळ आहे, इनफॅक्ट पॉवरपेक्षा टायमिंगचा खेळ आहे जास्त. टायमिंग चांगला असेल, कनेक्शन चांगलं असेल, तरच तुम्हाला जास्त धावा येतील. म्हणूनच अगदी 40-45 किलोचा फलंदाज देखील चौकार षटकार सहज मारतो आणि 100 किलोचा पैलवान देखील त्याला बॅटला बॉलचं कनेक्शन होत नाही. म्हणून तुम्ही किती चांगलं कनेक्शन खेळताय, तुमची नजर किती चांगली आहे, आणि महत्वाचं म्हणजे टायमिंग. क्रिकेटमध्ये आणि आयुष्यामध्ये टायमिंग खूप महत्वाचं आहे. वेळेवर लग्न आणि वेळेवर शॉट पण खेळणं तितकंच महत्वाचं आहे. हा खूप क्लोज आहे, खूप क्लोज आहे. हा चेंडू ऑफ स्टंप मिस करत होता, बहुतेक लेग स्टंप मिस करत होता. चेंडू जाऊन आदळणार होता सरळ मधल्या या स्टंपवरच. बॅकफुटला तुम्ही गेलात आणि बॅकफुटला जर चेंडू मिस झाला, चेंडू खाली राहिला, तर तुम्हाला कोणीच वाचू शकणार नाही, अगदी अंपायर सुद्धा नाही.
पहिला विकेट चे लायन्स, चे सिंह सध्या तरी गरजत आहेत. अडचणीत थोडासा आलाय संघ बँड्राचा, परंतु त्यांच्याकडे फलंदाज असतील. पहिली मॅच आहे, सगळंच खेळाडूंना एकमेकांबद्दल एकमेकांच्या खेळाबद्दल माहिती नसते. बऱ्याच वेळा अशा मॅचेस मध्ये 7व्या 8व्या क्रमांकावरचा खेळाडू एकतरी येतो आणि सगळी मॅचच पलटून टाकतो. आणि कर्णधार स्वतः गेलाय बघा. वन डाऊन ला जाणारा कर्णधार, वन डाऊन जाणाऱ्या कर्णधारांबद्दल खूप आपण ऐकलं असेल. रिकी पॉन्टिंग तसा एक कर्णधार होता, जो वन डाऊन जायचा आणि वन डाऊन जाऊन फलंदाजी करणारे फलंदाज खूप कमी आहेत जे कॅप्टन्स आहेत. जनरली ओपनिंग बॅट्समन असतात किंवा चौथ्या नंबरवर खेळणारा त्यांचा कॅप्टन असतो. स्टीव्ह वॉय कसा कॅप्टन होतो, नंबर 5 आणि 6 वर खेळायचा. पण बहुतांश आपल्याला कॅप्टन्सी बदलतील आता. सध्या तरी सगळ्याच बाजूनी जाते, फेवरच्या बाजूनी जाते. एव्हिडन्स इन प्रूफ अगदी व्यवस्थित मांडलेले आहेत या सगळ्या वकिलांनी. या सांताक्रूजच्या सगळ्याच गोष्टी त्यांच्या बाजूनी जात आहेत. परंतु केस आणि क्रिकेट कधी बदलेल सांगता येत नाही. लेट्स सी व्हॉट ही गोइंग टू डू. यशपाल ठाकूर इज ऑन स्ट्राइक नाउ. MEPL Season 1 Bandra Sonics versus Santa Cruz Lions. Santa Cruz Lions have won the toss and decided to field first. We are into the third over. Yes. So the score is 5 for 1 and Magnificent Mayur has done the job, but this is some strange strategy. The bowler who bowled the second over bowled a fantastic over, but still he is being replaced. कभी कभी लाइफ में ऐसे हो जाता है ना कि आप सब कुछ अच्छा कर ले होते हो लेकिन आपके हाथों से चीजें निकाल लेती है. मे बी द कैप्टन स्ट्रैटेजी, ही वांट्स टू हैव डिफरेंट बॉलर एंड गिव अ डिफरेंट चैलेंज टू एवरी बैट्समैन. He saw that Sanjay Yadav was comfortable against the off spinner, so he has got a left arm spinner. You take any team, you will always have a left arm spinner. We have Akshar Yadav, we have Kuldeep Yadav. He seems to be a different kind of bowler, maybe like Akshar Patel. Beautiful action. He has a very nice technical action where you see him loading the ball, getting the ball in the right, and maybe slightly wide of the crease, and he has got that small turn from the wicket. You spinning a ball is different, getting a turn out of the wicket is different. He's got a turn out of the wicket. Oh, that is beautiful. What a shot! Will that be the first sixer? Oh, just one bounce. It is a boundary. What a good shot that was. It was beautifully flighted delivery, a fantastic ball. But what a shot that was. Sanjay Yadav playing like Surya Kumar Yadav. Surya Kumar Yadav stays in Chembur, just 2 kilometers from here. He has his residence. And this man, if he plays like that, it's going to be very good for the team Bandra. The Bandra team needs all of this. That's the first boundary of the MEPL. He goes for it again. Chance of getting a run out. Oh, what a throw! What a throw! That is sensational throw. And fantastic work. Sanjay Yadav is not happy, but the team in purple is very happy. They have got a very good batter out. I don't think there is a deficient decision referral system. We need to have 4 5 cameras for it, maybe 3 even. And I thought that was out because the way he picked up the ball and threw in one motion, that looked out. Is there a decision referral system in the tournament? We'll just wait for it. So what a fantastic wicket that was. Jainil took a player who was looking in good form. Sanjay Yadav took some time, but the way he hit that first boundary, I thought he's a big match player. He did not move his feet initially, but what a good shot that was, which we hit previous to the ball in which only he got run out. What a fantastic boundary that was. And just after that, he went for the big heave. It was an underedged. The ball went straight to the fielder. Clean pickup and fantastic throw. And Sanjay Yadav is out. He was looking so good.
After a slow start, he looked good. Unfortunately, he's out. The score is 9-9 for the loss of Sanjay Yadav and his opening partner. Both the opening batsmen are back. Yashpal Thakur is there, and the new batsman coming in, Bhavesh. Bhavesh Thakur, the two Thakurs, the two brothers playing together. We only talk about Pandya brothers, but there were so many brothers playing together. If you talk about twin brothers, Steve was one brother. There were three brothers playing together in the New Zealand team where the Rutherfords were playing together. Three brothers in a single team. We have two brothers in a single team. The Grant Flower and Andy Flower, the two brothers from Zimbabwe. That is the first extra, I think, of the innings. That would be three wides, I think. We'll wait for the umpire's call. Yes, three wides. So wide plus two, that is three wides added. So these extras are always good. They always are helpful for the batting team. The bowling team would try and avoid it. He's such a good bowler, nice, beautiful action, but he's seeming to be slightly expensive over here with his line and length. Again, a big appeal. Very good call by the umpire, clearly saying no immediately. You always like an umpire who gives a decision quickly. Maybe you need to wait for a while, but if you are confident enough, the umpires are confident enough, the players feel confident that the umpires are going to give the right call. This was sliding down the leg side. He negated the call immediately. The two brothers playing, the two Thakurs playing. Beautifully played, straight to the field, a good call. The understanding is good between the brothers. The clear call of no.
First shot of command, and what a shot that was. The outfield is very thick over there, but the weight of the shot was such, the timing was great. And first runs, the first big runs against Mayur, who has bowled sensationally well. He has been their best bowler, considered just singles in his first 2 overs which he bowled, also took a wicket. But this is super timing from the captain. Good to see the advocates enjoying the time on the ground. In the court, they must be arguing against each other. Right now, this is what they love to do. The two brothers are playing together. Yashpal Thakur, the captain of the team, playing along with his brother. They did not start that well, but they are coming back strongly in the contest now. The team in yellow, the team Bandra Sonics, are trying to get their feet back into the contest. MAPL Season 1, we thank all the sponsors who have been a part of this tournament. That is a classy hit of the front foot. Maybe not that much of footwork, but that was beautifully timed. Straight to the fielder though. So Mayur, who bowled his first 2 overs just for single runs, has been taken for a boundary in this over. But Santa Cruz Lions would be elated with the start which they have got. We have the owners of the two teams, Advocate Prakash Rohira and Advocate Kushal Moore, the two owners of the team, Ashwat Nair and Yashpal Thakur. Oh, what a shot that is! Oh, brilliant! Brilliant! That is sensational catch. This is the moment of MAPL Season 1. What a catch that is! That is a high class catch. That is maybe one of the highlights of the day. Maybe the highlights of the tournament. What a catch into the covers, dismissing the captain of the opposition, taking off the best player. What a sensational catch that is. That is a moment to remember. Ashwat Nair, the captain taking off the captain. What a catch that is. Ashwat Nair. If you translate Ashwa, that is a stallion or a horse. That man, that was a jumping cheetah or a leopard, I would say. What a catch that was. He was there in there. He was airborne and he took it beautifully. The catch did not stick. It was a proper technical catch taken with two hands. To his left, Ashwat Nair dismisses Yashpal Thakur. Oh, what a sensational catch by the captain that will lift the team and the Santa Cruz Lions would be happy to no end, but they have dismissed the captain of the opposition, that is Yashpal Thakur, who was looking so good in his small stage. He has been sent back. Unfortunate for the Bandra Sonics because Sanjay Wada was looking good. He was run out. Then we had Yashpal Thakur opening his arms and he got out. MAPL Season 1. This tournament is proudly sponsored by Provokil, Tata Capital, Voyage Motors, DigiLegal, Total Sports, Royal Trading, Image Design Studio, Fast and Up, Sula, and Dr. Vallari Suchak. Thank you so much, all the sponsors who have been a part of this fantastic tournament. And Provokil are major sponsors. This tournament is also co-powered by Tata Capital, Voyage Motors, DigiLegal, Total Sports, Royal Trading, Image Design Studio, Sula, Dr. Valerie Suchak. Thank you so much, all the sponsors who have been a part of this wonderful tournament. And you must have thought it's a advocates tournament, so the quality of the cricket won't be that great. But fantastic bowling, superb fielding, and you just saw some sensational catching into the short extra cover region. Ashwat Nair dismissing the captain of the opposition. It's a That is why you say you flight the ball. You flight the ball and you're going to bowl results. Beautiful action, nice flow, nice flight to the ball. And he's extracting a bit of bounce from the wicket, which is keeping a bit low. Initially, we saw a couple of balls just keeping a bit low. Right now, it's a nice bounce onto your knees here. You can hit the ball nicely. The ball is bouncing beautifully now. Oh, that is nicely bowled. Beautiful line, beautiful length. The pace of the ball was fine. The flight was fine. The line was absolutely immaculate. Straight to the fielder at point. So captain did not have the first great over, but what a catch he took.
Ashwath Nair, the captain of the team. Beautiful arm ball. This one was pushed in quickly. This is where he's showing all his just trying to flight the ball, putting it outside the off stump, bowling it quickly, bowling it slowly, bowling the arm. Quicker one, he's trying and giving it all. That is nicely bowled again. All six balls in six different trajectories, six different pace, and he has got the ball in the right areas every possible time. The score at the end of this is over is exactly 19 runs for the loss of 3 wickets. छह ओवर की समाप्ति पे स्कोर है 19 रन 3 विकेट के नुकसान पर 16 for 3 at the end of 6 overs. They lost the two opening batters and they lost Yash Thakur. Just updating the score, it is 21, not 19. So 21 for 3. MAPL Season 1. Thanking all the sponsors again. Pro Vakil, Tata Capital, Voyage Motors, Digi Legal, Total Sports, Royal Trading, Image Design Studio, Fast Chanab Sula and Dr. Vallari Suchak. So Mayur More bowling his final over. He has bowled 3 overs on the trot. He's bowling the fourth over. He's all he's almost that kind of a man in the office who does almost all the job on his own. That kind of a player in the team who is your major bowler. There are so many bowlers. Deepak Chair from Chennai Super Kings used to bowl 4 overs on the trot. Josh Hazelwood does it for Australia. The Indian team, sometimes when the bowlers are bowling well, they all go for it. Is bowling his fourth over on the trot. Well, that is nicely played. The ball is running away. Maybe a couple, surely a couple. 2 runs added. The score moves on to 23 now. 23 for 3. 23 runs on the scorecard. It is the Santacru Lions versus the Bandra Sonics. Match number 1, season 1. This tournament is played at 3 different destinations right now. We are in Chereshwar, which is in Trombay, into the fag end of the Mumbai city. It is one of the best grounds to play your cricket. The outfield is slightly thick since it's the beginning of the season, but things are going to be beautiful. Just see a fantastic vicinity. You have a beautiful ground and also the tabletop background. It's a beautiful hill. There is these are we have towards the western side we have the BARC campus. Towards the northern side, I would say it is the wonderful sea or the backwaters. He went for the big booming drive. And towards the northern side, we have maybe Mankur than that at that region. So it's a beautiful ground where you have mountains on one side, you have water bodies on one side. Again, towards the east, we have a water body, which are the backwaters. And also towards there, we have the big Mumbai city coming up. Oh, that's beautifully bold. He has done everything right. He has not done anything special. Keeping it straight and simple. Management में कहा जाता है ना KISS. वो वाला kiss नहीं जो French kiss. It is keep it straight and simple. There's so many sponsors to this tournament. We have various legal firms. We also have some, I would say, motor companies. We have sports companies. We have trading companies. We have doctors. We have marble companies also. Akash Marble is also one of our sponsors. तो सारे लोग वकीलों पे खर्चा कर रहे हैं. That everybody knows. But यहाँ पे sponsors भी सारे field से उन्होंने ले लिए. So right from every field we have a sponsor. अतिशय अप्रतिम सुरुवात झाली आहे पहिला 6 षटकांमध्ये सँटाक्रूजसाठी. मात्र वेळ बदलेल जर या दोन्ही फलंदाजांनी या गोष्टी आपल्या हातात घेतल्या तरी. सगळे वकील आहेत पण कोर्टात केस लढण्यापेक्षा मैदानात केस लढण्यात जास्त मजा घेतील. कारण क्रिकेट हे सगळ्यांचं पहिलं प्रेम असतं. आपण कितीही काय म्हटलं जरी आपण एखादा डॉक्टर किंवा कोणी वकील असेल, कोणी शिक्षक असेल, कोणी दुसरं काम करत असेल, आपल्या सगळ्यांचं पहिलं प्रेम क्रिकेटच असतं. आपल्याला 2 ऑप्शन्स दिले, एक परिवारासोबत फिरायला जा, दुसरं क्रिकेटच्या मैदानावर या. तर पहिलं अंदाज आपण क्रिकेटच्या मैदानावरच येऊ.
तुम्ही किती पैसे कमवाल पण क्रिकेटवर खेळून आपल्या टीमला विजय मिळवून देण्याचा आनंद असतो. वॉट अ शॉट, अतिशय अप्रतिम फटका फ्लिक केलाय, अतिशय जबरदस्त. शुभमन गिलची आठवण करून दिली आहे. शुभमन गिल जनरली तो शॉट मिड विकेटच्या दिशेने खेळतो, हा शॉट स्क्वेअर लेगच्या दिशेने खेळला गेला. अप्रतिम फुटवर्क आणि हा चौकार. आणि मयूरच्या गोलंदाजीमध्ये फक्त त्यांनी 2 चौकार खाल्लेत आणि पॉवर प्ले मध्ये गोलंदाजी करताना एक चौकार खाणं, त्याच्यानंतर चौथ्या षटकात आणखीन एक चौकार खाणं, अप्रतिम गोलंदाजी. अतिशय सुरेख गोलंदाजी केली आहे मयूरनी. मात्र शेवटच्या चेंडूवर त्याचे जे आकडे होते थोडेसे बिघडले, परंतु त्या देखील ते चांगले असतील. पहिल्या 2 षटकांमध्ये एक एक धावा देणारा मयूर तिसऱ्या षटकात एक चौकार खाल्लाय, चौथ्या षटकात एक चौकार खाल्ला, तरी अप्रतिम. जेव्हा तुम्ही 20च्या खाली धावा देता त्यावेळी तुम्ही संघाच्या सगळ्यात चांगल्या गोलंदाजांपैकी एक तुम्हाला गणलं जातं. विश्वचषक आपण जिंकला, जो वर्ल्ड कप 50 ओव्हरचा असेल किंवा 20 ओव्हरचा असेल, आपण विराट कोहली बद्दल बोलतो, आपण सूर्यकुमार यादव बद्दल बोलतो, आपण फलंदाजांबद्दल बोलतो, परंतु वर्ल्ड कप आपल्याला जिंकून दिला गोलंदाजांनी. सूर्यकुमार यादवनी 30 चेंडू, माफ करा, बुमराहनी 30 चेंडू 30 धावा असताना ती मॅच आपल्याला जिंकून दिली. अर्शदीप यादवनी चांगली गोलंदाजी केली होती. शेवटचं षटक हार्दिक पांड्यानी चांगलं टाकलं. म्हणजे गोलंदाज आपल्याला टुर्नामेंट जिंकून देतात, फलंदाज मॅचेस जिंकून देतील. टुर्नामेंट जिंकायची असेल आपल्याला गोलंदाजी चांगली करावीच लागते आणि गोलंदाजच टुर्नामेंट जिंकून देतात. सध्या तरी या वकिलांच्या सगळ्या केसेस जिंकतायत सध्या जी सांताक्रूजची टीम आहे. परंतु का हिंदी में कहते हैं ना, वक्त बदलने में वक्त नहीं लगता. वेळ बदलायला जास्त काळ लागत नाही. अगदी थोड्याच वेळात 1-2 चांगले शॉट्स लागतील आणि पुन्हा एकदा की येलो बॉयज आहेत ते, हे मात्र पुन्हा एकदा या मॅच मध्ये कमबॅक करू शकतील. बॉलर कोण आहे? उमंग शेख, शेठ, सॉरी, पूर्ण चेंजेस करून टाकले त्यांना मी. उमंग शेठ आहेत. याच्यावर माझ्यावर केस टाकू नका मात्र. अप्रतिम अप्रतिम सुरेख प्रयत्न. चेंडू ज्या वेळेला फाईन लेगच्या दिशेने जातो अतिशय वेगात जातो आणि तो थांबवणं तितकं सोपं नसतं. 2 धावा अडवल्यात त्यांनी आपल्या संघासाठी. तर मयूरनी 4 षटकं टांगल्यानंतर पुन्हा एकदा त्याला चेंडू अडवण्याची संधी येते. म्हणजे चेंडू अगदी चुंबकासारखा त्याच्याकडे जातोय आणि तो तिकडे पकडतोय. गोलंदाजी नाही केली असणार तरी चेंडू क्षेत्ररक्षक म्हणून त्याच्या दिशेने जातोय खरा. Umang Seth bowling his second over. He bowled the second over of the power play and he gave 4 runs. He bowled a beautiful over. After that has been called back to bowl the 8th over. So they are mixing up. Ashwath Nair bowled a couple of overs in the power play. Mayur bowled 3 overs in the power play and 1 over was bowled by Umang Seth. Umang Seth bowling his second over. That is beautifully played. Nicely played. Nice action. He's using his height to get that extra bounce. Washington Sundar is one kind of bowler who bowls off spin and gets that extra bounce. That is the reason he's being called upon to bowl the tight lines. He's that kind of a bowler, a tall bowler like Washington Sundar, trying to bowl the off spin and trying to bounce and cramp the batsman so that the batsman does not get any room to play with. That was bowled slightly up. There is a couple in it. They should get 2 in it. They should definitely get a couple. Fantastic running between the wicket. That is how you take your runs. Played with soft hands and he took off for the second run immediately. If you hit the ball very strongly, the ball is going to go straight to the fielder. Play with soft hands, take couples. And once the fielders come in, you try and hit them above their heads. So the fielder at that mid-wicket region has been called up in the circle. So you can hit the ball up and over him now. You can hit the ball over him and get a boundary and maybe a couple. Now that's a good fielding position for Umang Seth because he can restrict a cup singles even. A single was scored, then a couple was taken. So that's a good position, not only for saving the double, in fact it can save a single for him. But that's good field setup right now for Umang Seth. Nicely bowled. Oh, that is nicely played. Playing with soft hands, dropping the ball with soft hands and taking a single and running off. That's good way of Akash Marbles. I beg your pardon. I've changed the brand completely. Oh, beautiful bowling. And good call by the umpire. The ball was actually rising, it was bouncing. So he just indicated that to the bowler. So that's always good. Oh, what a shot that is. Beautifully played. Just 1 run. But that's nicely played. Using his footwork to precision. Footwork does not mean always to step down the ground and hit the ball down the ground. It is always shuffling back, getting onto the back foot, cut down. It is always shuffling back, getting onto the back foot, cut the ball on the offside,
trying to lift the ball into that mid-wicket region. That was nicely played. The score moves on to 32. We are into the ninth over. So that's nicely played, beautifully played with soft hands, but straight to the fielder. The reason the ball did not travel quickly because the pace on the ball was slow. The ball was bowled slowly. Because the pace of the ball was slow, he wasn't able to use the pace of the ball and glide the ball into that third man region. Nicely bowled again. Yes, slowing down the pace. That is how you should be bowling as a spinner. If you try and bowl quickly, the batsman is going to use your pace and take you for singles and doubles and maybe probably for sixes and boundaries. Bowl the ball a bit slow. He has to manufacture all that speed. Now I don't. I think he's strongly going to go for a big one now. In fact, he plays it smartly. There is again a couple in it. No, just one run. The scoreboard is just not moving. The score has gone on to 33 now. 33 for 3. We are into the ninth over. They need a minimum of 130, 140 if they want to pose any kind of challenge. And things can change in the second half. After the first 10 overs, the things can change. What a shot! But again, a place where the outfield is very thick and you need to place the ball correctly. The problem when they decided the end, they should have decided the end on the other side because the first 15 overs, first 10 overs you play on the offside, the last 10 overs you try and slot the ball on the leg side. Right now the problem is everything on the leg side, the outfield is going to be very thick. So leg side outfield it's going to be very thick, so the ball is not going to travel. First 10 overs, the leg side was the where the outfield was slightly quick. Things have changed now. तो पहले 10 ओवर में जो आपकी जो एंड हमने चूज किया था या 5-6 ओवर्स में हम लोग चेंज कर रहे हैं वो थोड़ा सा अलग हो जाएगा मे बी 6-4 दे आर गोइंग टू प्ले पहले 6 ओवर एक एंड से दूसरे 4 ओवर दूसरे एंड से जस्ट टू सेव टाइम तो फिलहाल जो लेग साइड का जो आउटफील्ड है वो काफी ठीक है अभी वो टाइम आ चुका है कि जहाँ पे चौके छक्के के लिए लोग जाएंगे तो अगर आउटफील्ड क्विक है वो फिलहाल ऑफ साइड पे है Umang bowling it right, but the bounce on the ball just saved the batter. ऑप्शंस क्या है देखिए बैट्समैन के पास एक शॉट ये होगा कि वो उसको पैडल स्कूप करे या तो वो बॉल को पुल करे स्क्वायर लेग की डायरेक्शन में बिकॉज वहां पर एक फील्डर है जो फाइन लेग में अंदर है वो थोड़ा 45 से ज्यादा 50 डिग्रीज पे है दैट इज हाउ दे हैव गॉट देयर रन्स नाउ टेकिंग सिंगल देयर इज अ चांस ऑफ एन ओवरथ्रो व्हाई डिड ही रिफ्यूज Why did he refuse? He could have easily walked a single over there. The second run was always on. So MAPL season 1, this is, we are getting the live pictures from Chereshwar ground in Trombe. It's a beautiful village and in the middle of the village, in fact in the heart of village, it's a, so many teams also play from here. There is a local team which plays here. They call it Kiran 11 and also Patil 11, few teams which played from Trombe. And they play a lot of leather ball cricket and all the run scoring has been very difficult. MAPL season 1 and the team in yellow is in a lot of trouble.
So that is beautifully played off the soft ends. No communication between the two batters. So Ashwin Rasad is the new batter, and it is responsibility of Ashwin and Bhavesh to take care now. Yes, beautifully bowled, a big appeal, and the umpire has given him out. The bowler was convinced, the wicket keeper was convinced. The batsman said there was some doubt in it. The umpire had no doubt in it and giving it out. That is another wicket down. Fifth wicket down now on the score of 36. Ashwin Rasad is out. Wicket keeper Ahmed Kazi has taken it beautifully. विकेट कीपर्स के बारे में अगर आप बात करोगे, विकेट कीपर्स और अंपायर्स की बात तभी होती है जब वो कोई गलतियां करते हैं. विकेट कीपर और अंपायर से बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं होती कि उनसे तो बनता है. कैचेस ये मुश्किल इसलिए होते हैं कि आप कितने भी बड़े विकेट कीपर क्यों ना, आप एम एस धोनी हो या आप गिलक्रिस्ट हो या आप कोई भी हो, जब एजेस लगते हैं तो गेंद कैच करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है. अगर आप अच्छी पोजीशन में आ गए, आपका नसीब अच्छा हो, तो गेंद ग्लव्स में चिपक जाता है. बिकॉज कौन सी दिशा में कितनी स्पीड से गेंद डाइवर्ट होगा आपको नहीं पता. अगर हल्का एज है तो आपको मिल जाएगा, थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा लगे तो वो विकेट कीपर कैचेस नहीं पकड़ सकते. टेनिस बॉल क्रिकेट में आपके बॉडी को लग के बाउंस होकर आप कैच पकड़ सकते हैं. लेदर बॉल क्रिकेट में ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल. तो वो कैचेस चिपक जाते हैं, आपको अच्छी पोजीशन में आना पड़ता है. काफी अच्छी पोजीशन में आए और अपने हाथ पीछे रखे, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अगर आप विकेट कीपर्स की बात करोगे तो एम एस धोनी से भी अच्छे विकेट कीपर थे वृद्धिमान साहा, कि वो गेंद को अपने यहाँ पे आने देते थे और उनके लिए स्लिप लगाने की जरूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि वो ऑलमोस्ट फर्स्ट स्लिप और सेकंड स्लिप तक का एरिया कवर जाती थी. इतनी दोनों तरफ उनकी रीच अच्छी होती थी. आपको एम एस धोनी याद नहीं आएंगे कि लेफ्ट राइट में डाइव करते हुए, लेकिन अगर आप वृद्धिमान साहा को याद करोगे तो लेफ्ट और राइट में कूदते हुए नजर आएंगे. किरण मोरे एक अच्छे विकेट कीपर थे, सैयद किरमानी अच्छे विकेट कीपर थे. लेकिन अगर विकेट कीपर्स की फिलहाल में बात करो तो जो फिट हो जाए उसको खड़ा कर देते हैं. जब के एल राहुल हो, संजू सैमसन हो, जितेश शर्मा हो, ये अच्छे बैट्समैन है, क्रिकेटर्स है, लेकिन उतने अच्छे विकेट कीपर है कि नहीं, वो क्वेश्चन मार्क हमेशा रहता है. लेकिन अच्छा विकेट कीपर अहमद तो मिला है इस सेंटाक्रूज की टीम को. तो विकेट कीपर का काम इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि विकेट कीपर ऑलमोस्ट हैज टू बी अ वेरी गुड बैटर. कई सारे टीम के जो विकेट कीपर अच्छे रहे, एडम गिलक्रिस्ट, इयन हीली ऑस्ट्रेलिया के लिए. हमारे इंडियन क्रिकेट टीम में देखा है तो ऋषभ पंत एब्सोल्यूट मैच विनर्स. ऋषभ पंत, जसप्रीत बुमराह जैसे प्लेयर से पूरा टेस्ट मैच का गेम घुमा देते, रियल प्योर मैच विनर्स. ये विकेट कीपर मैच विनर रहे, उन्होंने अच्छी कैच पकड़ी है. अब 6 विकेट गए हैं, 5 विकेट गए हैं, आधी टीम आउट हो चुकी है, लगभग आधे ओवर खत्म हो चुके हैं. कई बार हमें लगता है कि मैच खत्म हो गई, कुछ नहीं हो सकता. क्रिकेट का ऐसा खेल है कि वक्त बदलेगा और जरूर बदलता है, हर किसी को टाइम मिलता है. फुटबॉल को कहा जाता है इट इज अ गेम ऑफ 2 हाफ्स, जिसमें 45-45 मिनट के 2 हाफ्स होते हैं. क्रिकेट का भी गेम T20 का 2 हाफ्स की तरह होता है. 10 ओवर तुम्हारे तो 10 ओवर हमारे भी हो सकते हैं. ब्यूटीफुल शॉट, लेकिन उतना अच्छा कनेक्शन हुआ नहीं. कटोरी शॉट जिसे कहते हैं, उस तरीके शॉट का बैक कट का उनका प्रयास जरूर था. 1 रन मिलेगा. अब रन आ नहीं रहे चौके छक्के से, तो करे क्या, तो सिंगल्स पे ध्यान देना चाहिए. और जो डबल्स यहाँ पे बहुत मिलेंगे क्योंकि आउटफील्ड काफी ठीक है और सारे प्लेयर्स बाउंड्री राइडर्स बाउंड्री पर है. तो अगर आप गेंद को अगर आप पुश भी करोगे तो घास में अटक जाएगी, 2 रन आप भाग सकते हो आराम से, बिकॉज गेंद उतनी फास्ट वहां पर कैरी करेगी नहीं, जाएगी नहीं, वो ट्रैवल करेगी नहीं उस टर्फ पे. तो वंडरफुल लेग स्पिन बॉलिंग. आपने एक ऑफ ब्रेक बॉलर देख लिया, आपने मयूर को सीम अप बॉलर देख लिया, उमेश जो था ऑफ ब्रेक टॉल ऑफ ब्रेक बॉलर देख लिया, एक लेफ्ट आर्म स्पिनर अपने अश्वत्थ नायर के स्वरूप में देख लिया. जब लेग स्पिनर गेंदबाजी करने हैं तो अलग मजा रहता है. ही इज अ ब्यूटीफुल लेग स्पिनर. एक्शन भी देखिए उनकी काफी अच्छी है. शेन वॉन की याद दिला रहे हैं. नहीं, शेन वॉन इतना वाइड नहीं डालते, इतना शॉर्ट नहीं डालते. लेग स्पिन आर्ट बहुत मुश्किल, सबसे कठिन गेंदबाजी है लेग स्पिन करना, बिकॉज गेंद को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है. एडम जैम्पा ऑस्ट्रेलिया के विकेट कीपर है, वो लेग स्पिनर है. वो हमेशा पहले ओवर में सारी फील्ड को स्प्रेड करते हैं क्योंकि उनको कंट्रोल नहीं रहता पहले ओवर में. फर्स्ट ओवर के बाद वो अपनी फील्ड को अटैकिंग करते हैं, बिकॉज पहले ओवर में कंट्रोल लाना वो शेन वॉन को ही. व्हाट अ शॉट. फिर एक बार वहां पे कैप्टन है शायद अश्वत्थ. और लेग स्पिनर्स आपको हमेशा बाउंड्री बॉल्स देंगे, फुल टॉस देंगे, शॉर्ट बॉल देंगे, लेकिन सबसे ज्यादा विकेट्स लेग स्पिनर्स ही निकालते. ये शॉर्ट बॉल था जो कन्वर्ट नहीं कर पाए. लेग स्पिनर्स आपको फुल टॉस भी देंगे, शॉर्ट बॉल भी देंगे, लेकिन एक ऐसी गेंद भी देंगे जिसमें आपका विकेट चला जाए. शॉर्ट बॉल आउटसाइड दी ऑफ स्टंप, अगेन उसको कन्वर्ट नहीं कर पाए. ये बॉल ठीक इसलिए था बिकॉज उसकी लाइन ठीक थी, ऑफ स्टंप के बाहर थी, लेकिन बहुत ज्यादा रूम दिया था.
वहां पर अगर आप आउटसाइड ऑफ स्टंप डालो तो भी ठीक है, बिकॉज वहां की आउटफील्ड काफी ठीक है। चौका वहां पे उतनी अच्छी आसानी से लगेगा नहीं। ब्यूटिफुली बॉल्ड, ये सबसे अच्छी गेंद थी उनकी। राइट लाइन, राइट लेंथ, राइट पेस और राइट फ्लाइट भी। एक्स्ट्रा फ्लाइट दोगे तो भी परेशानी हो जाती है। आप फ्लैट डालोगे तो आपको विकेट्स नहीं मिलेंगे। और अगर आपका लाइन बराबर नहीं है तो भी आप दंडित किए जा सकते हैं। मुंबई एडवोकेट्स प्रीमियर लीग सीजन 1, 3 अलग अलग जगह पे ये मैचेस खेले जा रहे हैं। आज का ये पहला मैच, और इस पहले मैच में सेंटा क्रूज और बैंड्रा के लॉयर्स, ये सारे एडवोकेट्स हैं, वकील में एक दूसरे के साथ लड़ते हैं। फिलहाल ग्राउंड पर एक दूसरे के साथ लड़ेंगे। ओ दैट इज ब्यूटीफुली बॉल्ड। ये प्रॉपर लेग ब्रेक था। देखिए ग्राउंड में ये विकेट की खासियत है, उसमें एक घास का कवर भी है, थोड़ा सा गीला भी है क्योंकि सुबह का वक्त था, और अच्छा बाउंस मिल रहा है। क्रिकेटर्स को क्या चाहिए? एक अच्छा सा ग्राउंड, आउटफील्ड, अच्छी विकेट और प्रॉपर 2 अंपायर्स, बाकी कुछ नहीं चाहिए उनको। वो उतना मिल जाए तो वो खुश हो जाएंगे। ये ग्राउंड काफी बेहतरीन है। आप यहाँ के जो लोग हैं उनको उतना वो स्पेशल नहीं लगेगा, लेकिन जो नया आएगा उस इस ग्राउंड में आप बिल्कुल इसके प्यार में पड़ जाओगे, बिकॉज ये ग्राउंड काफी सुंदर है। पीछे का बैकग्राउंड काफी अच्छा है। वहाँ पे ट्रॉम्बे हिल्स जो पीछे है वो काफी खूबसूरत लगते हैं। सारी तरफ आपको हरियाली नजर आएगी, और सारे जो नारियल के जो पेड़ है उसको और खूबसूरत बनाते हैं। आज के जो मुंबई के जो कंक्रीट जंगल में, एक बहुत ही बेहतरीन पैराडाइज इन द मिडल ऑफ कंक्रीट जंगल कहोगे। बट यहाँ पर एक ही प्रॉब्लम होगी कि यहाँ पे जो लाइट्स नहीं है। अगर यहाँ पर लाइट्स होती तो शायद ये मुंबई का सबसे बेहतरीन ग्राउंड्स में एक अच्छा हो जाता। ग्राउंड के डायमेंशंस काफी अच्छे। व्हाट अ शॉट अगेन इनटू द कवर्स। शॉट्स काफी कम देखने मिले, और मुंबई की भीड़ में धक्का और मैच में चौका छक्का जब तक आए नहीं तब तक मजा नहीं आता। बाउंड्री जरूरी है, तो थोड़ा पॉजिटिवली खेलना चाहिए, थोड़ा खुल के खेलना चाहिए। क्रिकेट में और लाइफ में अगर आपको कुछ लेना है तो रिस्क लेना पड़ेगा। You need to take chances. You need to go for those big shots. Maybe not in air, but all along the carpet. Oh, beautifully bowled. That was an arm ball bowled by the captain, Ashwath Nair. The first ball was flighted. This was the arm ball pushed quickly. Ashwath Nair, he bowled the second over of third over of the innings. Then he again bowled the eighth over, and now he's bowling in to that 11th or 12th over. Nicely bowled again. Played with soft hands. There is a chance of a second. Just 1 run. So 42 runs for the loss of 4 wickets. We are into the 12th over. So almost 60% overs हो चुके हैं, 40% overs बाकी है, लेकिन runs आ नहीं रहे हैं। 5 wickets. That's a full toss. That has to be a no ball. Yet it is called a no ball. He is happy, but वो मोए मोए होता है ना, वैसे हो गया। कोर्ट में सब कुछ ठीक हो गया। ऑलमोस्ट जो क्रिमिनल था उसको सजा मिलने वाली थी। लास्ट टाइम पे आकर जो चश्मदीद गवाह था उसने अपनी जबान बदल दी। नो बॉल निकल गया, वो मैनेज हो गया गवाह, और वो नो बॉल दे दिया गया। वो सेटलमेंट हो गया। ऑलमोस्ट उसको 302 से फांसी होने वाली थी। चश्मदीप गवाह ने अपनी जबान पलट ली। नो बॉल, फ्री हिट। Oh, what a shot! This is first. Oh my God! I'm just waiting to see the first sixer of MAPL. वो छक्का आ नहीं रहा है। केस अभी भी हाई कोर्ट में ही है, सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा रही है। Wonderful hit down the ground. What a shot that was! What a shot that was! What a shot that was down the ground. That is the first proper strong hit. Use your muscles. Use those strong arms. Nicely played. ये अच्छा है। देखिए, इवन इफ यू आर अ बिजनेसमैन, आपको रोज बम्पर सेल नहीं होने वाला है। मंडे सेल नहीं होगा, ट्यूसडे थोड़ा होगा, वेडनेसडे को थोड़ा अच्छा होगा, सैटरडे संडे को तो बम्पर सेल होगा। तो हर बॉल पे चौका छक्का नहीं आएगा, बट यू नीड टू वेट फॉर द गुड बॉल्स, एंड यू नीड टू वेट फॉर द अपॉर्चुनिटीज टू गो बिग। यू गॉट एन अपॉर्चुनिटी, गॉट अ बाउंड्री, you need to find out a few more balls like that. That is a chance of a run out. Takes a single, and the score moves on to 40. 50 runs, in fact, 50 runs. 12 overs and 50 runs for the loss of 5 wickets. 50 for 5, 50 run, 5 wicket. So MAPL, we thank all the sponsors who have been a part of this tournament: Pro Vakil, Tata Capital, Voyage Motors, DigiLegal,
Total Sports, Royal Trading, Image Design Studio, Fasten Up, Sula, Dr. Varari Suchak, and Akash Marbles. Thank you so much, all the sponsors, for being a part of this tournament. This tournament has 8 teams, and all the teams would get 3 matches in the league matches, 2 groups of 4 teams each, और चार चार टीम्स के 2 ग्रुप में 3 मैचेस हर टीम को खेलने मिलेंगे, फिर 4 टॉप टीम सेमीफाइनल्स में क्वालिफाई होंगे। इस बार ये टूर्नामेंट 3 अलग अलग जगह पे खेली जा रही है। फिलहाल MIG बैंड्रा में खेला जा रहा है, यहाँ पर खेला जा रहा है, और एक वेन्यू पे खेला जा रहा है। तो ये आज का ये पहला दिन है यहाँ पर 3 मैचेस खेले जाएंगे फर्स्ट हाफ में, और 3 मैचेस, मतलब 6 मैचेस आज खेले जाएंगे। टोटल आपके लीग मैचेस हर टीम को 3 मिलेंगे। टॉप 4 टीम्स क्वालिफाई होंगे सेमीफाइनल के लिए, एंड वील हैव द चैंपियंस इन द नेक्स्ट वीक। तो ये साइमल्टेनियसली टूर्नामेंट खेला जा रहा है, तो हर किसी का रिजल्ट पे हर किसी का ध्यान जरूर होगा। शॉर्ट बॉल, व्हाट अ शॉट दैट इज, अगेन स्ट्रेट टू द फील्डर, दो कनेक्शन इज गुड। ये दोनों प्लेयर्स अभी ये स्कोरबोर्ड को थोड़ा जो रुक से गया था गाड़ी, उसको आगे ढकेलने का काम जरूर कर रहे हैं। पहले 10 ओवर में रन आए नहीं, लेकिन आखिर के 2 ओवर्स में अब स्कोर 1 जरूर है। तो 51 रन ऑन द स्कोर कार्ड, 51 रन हो चुके हैं, एंड द थिंग्स आर गेटिंग टू गेट अ मूव ऑन नाउ. That is beautifully played. They take the first one quickly. There is a 2 in it if they run quickly. So they are going to go against it because it's a good fielder over there. The score moves on to 52 with that single. The leg spinner has come in and he has bowled beautifully. But he's always going to give you the short ball. We are waiting just for one ball to be hit. Mid wicket में लंबे छक्के की दरकार है. Into the covers. Into the covers. A single that will take the score to 53. So 53 runs on the scorecard. That is outside the off stump. Has to be called a wide. Is a wide. Clearly outside the off stump. अंपायर्स, ये वकीलों को ये पता नहीं कि वो उनके वहाँ पे लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट होता है। यहाँ पर एक ही सुप्रीम कोर्ट है, अंपायर, उनके आगे कोई अपील नहीं है। यहाँ पर इनकी वकालत नहीं चलेगी। यहाँ पर अंपायर जो बोलेंगे वही फाइनल डिसीजन है। जनरली वकील है तो आर्ग्यू करेंगे, लेकिन यहाँ पर अंपायर इज द सुप्रीम कोर्ट. ही इज गोइंग टू गिव यू द फाइनल कॉल, एंड दैट वाज अ वाइड बॉल. बॉलर का एक पॉइंट ऑफ कंटेंशन था कि बैट्समैन जब आउटसाइड द ऑफ स्टंप शफल हो गया, लेकिन ये काफी गेंद बाहर थी. दैट इज द रीजन इट इज गिवन एज अ वाइड बॉल. That is pitched outside the leg stump. Once the ball pitches out the leg stump, the leg before completely goes out of the equation. The idea was right. This was the right ball to be chosen for the sweep shot. It was slightly maybe away from on the good length and on the leg stump. That was the right ball to be hit into that fine leg region or square leg region. Oh, beautiful ball. That is his best ball. Nice loop, nice turn, good trajectory, nice speed on the ball, and the ball turned, almost turned for 15 degrees. That kind of ball that was. Beautiful bowling. Inside out into the covers, maybe an option or maybe a sweep shot. He goes for a slog sweep straight to the fielder. These are the two shots which you can play. You can play the sweep shot, you can play the slog sweep, you can play the shot into the covers. If the ball is short, you can play the cut shot. So all 3-4 options when you get when you have a leg spinner bowling. The score at the end of this over is exactly 55 runs. An over in which they got 5 runs, 5 singles and a dot delivery in that over. So MAPL Season 1, we thank all the sponsors again. Provokil, Tata Capital, Voyage Motors, Digital Eagle, Total Sports, Royal Trading, Image Design Studio, Fast and Sula, Dr. Valery Suchak, and Akash Marbles. We thank all both the owners. Advocate Prakash Rohira is here, Advocate Kushal Moore is there. Both the openers, in fact, owners were there for the opening ceremony. We had Munchi, Advocate Munchi sir, doing the inauguration ceremony. Thank you so much, Advocate Munchi sir. Oh, that is hit into the pointer. That is running away. They have a couple over there. Beautiful throw. A couple of runs added. The score moves on to 57. We thank our major sponsors, Provokil, Tata Capital, Illegal, Total Sports, Royal Trading, Image Design Studio, Fast and Up, Sula,
Dr. Valery Suchak, Akash Marbles. The score has moved on to 57. That is fantastic batting from these two batters. Bhavesh is playing really well. The ball kept a bit low. 120, 130 can be a challenging score if you bowl well. The bowling has been really good. Just one wide in the entire innings. One wide. In fact, couple of wides, not more than that. One wide which was slid down the leg side. Another one which was bowled by the leg spinner. A couple of wides by the leg spinner. Other than that, it has been immaculate bowling. Oh, that is beautifully hit. Using the long handle. That's good fielding. That is fantastic work. Ashwath Nair, the captain, he was in the covers in the initial overs. He is into that cow corner mid wicket region right now. The score moves on to 58 now with that single. 58 runs on the scorecard. Oh, that is class. That is nicely bowled. On the off stump, on the good length area. The wicket which was slightly jiffy out at the in the start of the innings, that iffy wicket has turned out to be an even one now. The ball is bouncing beautifully, so you can go for your shots. The wicket is slightly slow, I would say. Oh, that is a class cover drive, but straight to the fielder. Oh my God, so much confusion. And that is out, clearly out. They were building up a nice little partnership, but that partnership is being broken now. That is a sixth wicket down on the score of 58. Oh, that is catastrophic. They were playing so well. They had built up a nice partnership, these two batsmen. Bhavesh is still there, but his partner has to go back. Misunderstanding, and they lose their sixth wicket on the score of 58. ये तो बात है जरा ये 14 होने वाला का 13. They need to find a few boundaries. The run rate right now somewhere around 4 runs per over. 4.15, 4.12 runs per over, which is not good enough. They need to find a few boundaries. They have lost 6 wickets, that is a problem. And 6 overs remaining. If you calculate maybe 8 runs per over, 48 runs. So that will take the score somewhere around 110, which is also not be going to be sufficient. So if they score maybe 9 runs per over, so they may get 9 6 is 63 plus 58. That will be around 113 15. That can be a challenging score. But even if with that score, they have to bowl really well if they want to win this match. The best thing about this tournament, it is a league tournament. So 3 matches for them to play. Even if Bandra do not do that well, they still have 2 more matches to make up with. But I strongly feel Yash Thakur and his team can come back. Umang is bowling his last over. Their bowlers have bowled really well. All the bowlers on show have done a great job. They have a leg spinner, they have a left arm spinner, they have an opening medium pace bowler.
They have a off spinner. They have all four different kind of varieties in their bowling. He is an off spinner who bowls like Washington Sundar. He tries to bowl the ball quick, almost a part timer kind of bowler, but he's their proper bowler. Washington Sundar is kind of a bowler who's a all rounder who can bat and bowl a bit. He's a proper bowler among Umang for his team. Oh, that's a good catch. And the Bhavesh was another wicket down, seventh wicket down, 57. That is caught and bowled beautifully. Bowled off spinner takes a wicket. 7 wickets down. They are 58 runs for the loss of 7 wickets. 11च खेळणार ना नाही काय काय टूर्नामेंट असतं ना कॉर्पोरेट चलो मुंबई ॲडव्होकेट्स प्रीमियर लीग या स्पर्धेचा आजचा पहिला दिवस. ही स्पर्धा 3 ठिकाणी खेळली जाते. ट्रॉम्बेच्या या ग्राउंडवर ही स्पर्धा खेळली जाते. याची पहिली मॅच आहे. सो सांताक्रूजची एक टीम आहे आणि समोर असणार आहे ती बांद्राची टीम. बांद्राची टीम सध्या तरी थोडीशी अडचणीत आहे. बांद्राच्या कोर्टाचं उद्घाटन झालं होतं. आपले सरन्यायाधीश त्यांनी सध्या तरी उद्घाटन करून गेलेत. मात्र बांद्राच्या टीमची हालत सध्या खराब आहे. हायकोर्टाच्या बिल्डिंगचं तिथे अनावरण झालंय. मात्र त्यांचा संघ थोडासा मागे. अतिशय अप्रतिम फटका. आणि हे 7व्या 8व्या क्रमांकावर येणारे खेळाडू आहेत ना ते खूप चांगला परफॉर्मन्स करून जातात. त्या खेळाडूची हाईट बघा. तुम्हाला आठवण येईल रोमेश कालू वितरणाची. तुम्हाला आठवण प्रत्येक मुंबईचे बरेचसे खेळाडू असे कमी हाईटचे होते. शेन ज्यावेळी पहिल्यांदा खेळायला आला इंडियामध्ये 96च्या टूरमध्ये आपले विनायक सामंत वगैरे छोटे छोटे प्लेयर सगळे 5-5.5 फुटाचे. शेनवॉनला जवळजवळ 200 धावा ठोकून काढल्या त्याला एकट्याला. आणि मुंबईने 3 दिवसात ऑस्ट्रेलियाला 2दा ऑल आउट केलं होतं. आणि तिथून त्यानंतर ती स्पर्धा यात मोठी मॅच झाली होती की ज्यात व्हीव्हीएस लक्ष्मणनी चांगल्या धावा केल्या. पण त्या टुर्नामेंटच्या अगोदर पहिल्यांदा ऑस्ट्रेलियाच्या संघाला हरवणारा मुंबईचा संघ होता. आणि त्याच्यात सगळेच हे छोटे छोटे हाईटचे प्लेयर होते. कम हाईट लेकिन टोटल फाईट वाले मुंबईचे प्लेयर्स असतात. कमी हाईटचा जरी प्लेयर असला तरी पहिला शॉट बघा किती सुंदर खेळला त्यांनी. हलक्या हाताने चेंडू खेळ अतिशय अप्रतिम प्रयत्न जरूर होता एक धाव रोखण्याचा. आणि क्षेत्ररक्षक ज्यावेळी गोलंदाज क्षेत्ररक्षण करतो ना आपल्या गोलंदाजीवर नेहमीच चांगला क्षेत्ररक्षण करतो कारण त्याला स्वतःच्या धावा वाचवायच्या असतात. स्ट्राईकवर आलेला नवीन फलंदाज नाही भावेश ना दुसरा जनार्दन. जनार्दन बघा कमी हाईटनी जरूर असतील पण जनार्दन बघा हे 7व्या 8व्या क्रमांकाचे फलंदाज खूप खतरनाक असतात कारण ते अगदी मारझोड करायलाच आलेले असतात. बघा दे जनार्दन. आमच्या कॅमेरामॅन ब्रॉडकास्टर म्हणतात जनार्दन दे जनार्दन. त्यांनी शॉट जरूर खेळलाय बघा. दोन्ही शॉट खेळले तो बिंदास खेळतोय. आणि अशीच फलंदाजी T20 क्रिकेटमध्ये असायला हवी. सगळ्यात छोट्या हाईटचा आहे पण त्याची जिद्द सगळ्यात मोठी आहे बघा. जनार्दन स्ट्राईकला आल्यानंतर दोन्ही शॉट त्यांनी मिड विकेटला खेळलाय. 2 चेंडूंवर 2 धावा जरूर खेळत. क्रिकेटमध्ये तुमची टेक्निक किती चांगली आहे तुमची किती चांगली बॅलन्स बॅटिंग करू शकता बॉलिंग करू शकता ते महत्वाचं नाहीये. तुमच्या जिद्द किती आहे ती जास्त महत्वाची. 60 रन 61 धावा झाल्यात. 15 ओव्हर 61 धावा.
So the score is 61, 61 for the loss of 7 wickets. Janardhan has come in and Janardhan has scored a couple of singles, but he has shown some nice technique. Janardhan is not going to slow down, and जनार्दन विल गिव्ह अस अ फ्यू रन. जनार्दन आल्यानंतर पहिल्या 2 चेंडूमध्ये 2 धावा जरूर काढल्यात. सगळ्यात छोट्या हाईटचे जरूर आहेत, मात्र ते समोरच्या संघाला चांगली फाईट देतील अशीच अपेक्षा करूया. उंचीवर जाऊ नका, पॅकेजवर जाऊ नका. सचिन तेंडुलकर 5 फूट 4चाच होता, मात्र जगातील सगळ्यात मोठ्या उंचीचा फलंदाज ठरला तो. अतिशय अप्रतिम फटका. चेंडू जातोय ऑफच्या दिशेने. पहिला स्क्वेअर कट झाला या इनिंगचा असं म्हणेन मी. एक स्क्वेअर कट जरूर मारला होता पहिल्या पॉवर प्ले मध्ये, चौकारासाठी गेला होता. त्यानंतर मारलेला हा दुसरा स्क्वेअर कट. पण जनार्दननी 3 धावा जरूर गोळा केल्यात. आणि बऱ्याच वेळेला ज्या कॉर्पोरेटच्या मॅचेस असतात, कंपनीच्या मॅचेस असतात, चांगले खेळाडू असतात ना 8व्या 9व्या क्रमांकावर येतात. त्यांची कधी कधी त्यांची तेवढी ओळख नसते किंवा टीममध्ये तेवढं वजन नसते. पहिल्या मॅच नंतर चांगला परफॉर्मन्स केल्यानंतर तो 8व्या क्रमांकाचा खेळाडू 1 नंबरवर जातो जरूर. सुरुवातीला ज्याची ओळख जास्त, ज्याचा पैसा जास्त, तो मात्र सुरुवातीला फलंदाजीला जातो. नंतर चित्र बदलतं, कारण त्या खेळाडूला आपली गुणवत्ता दाखवायला संधी मिळते. रवी शास्त्री असा एकमात्र खेळाडू होता की जो 1 ते 11 प्रत्येक क्रमांकावर खेळला. हा सगळ्यात चांगला फटका क्रिकेटमधला. स्ट्रेट इट डाऊन द ग्राउंड. चांगला फटका, चांगलं क्षेत्ररक्षण, अप्रतिम प्रयत्न देखील. ऑलमोस्ट त्यांनी कॅच झेल तो टिपला होता. 23 नंबरची जर्सी आहे. 23 नंबर जर्सी डेव्हिड बेकम इंग्लंडचा. सूर्यकुमार यादवचा नंबर 63 आहे बहुतेक. 23 नंबर फुटबॉलमध्ये खूप मोठा नंबर मानला जातो. 19 नंबर बघा, जो विकेट किपरचा आहे तो राहुल द्रविडचा नंबर. त्याच्या बायकोचा वाढदिवस लक्षात ठेवायसाठी त्याने ठेवलेला नंबर. इथे युवराज सिंग पण आहे कोणीतरी 12 नंबरचा. शॉट डाऊन द ग्राउंड खेळलाय. तिथे लॉंग ऑन आहे, तो वाईडिश लॉंग ऑन आहे. 1 धाव मिळेल जरूर एका धाव्याने. थ्रो बघा, अतिशय अप्रतिम. क्रिकेटमध्ये बॅटिंग बॉलिंग बद्दल म्हटलं जातं, पण क्षेत्ररक्षण देखील तितकीच महत्वाची बाजू. आणि याबद्दल यासाठी यांचं कौतुक करतोय, कारण सगळे लॉयर्स आहेत, एक ॲडव्होकेट्स आहेत, हायकोर्टमध्ये प्रॅक्टिस करणारे, आणि आपल्या कामात असताना देखील इतकं चांगलं क्रिकेट खेळणं हे कौतुकास्पद आहे. मुंबईच्या दगादग या आजकालच्या व्यस्त जीवनात आपण क्रिकेटसाठी वेळ काढतो ते खूप महत्वाचं. लेग डाऊन द लेग साइड. लेगच्या दिशेने चेंडू जात होता. चेंडूच्या ग्रीपवरून अंदाज घेतात बरेचसे खेळाडू. इथे चेंडू स्विंग होत नाही, सीम होत नाही, सरळ येतोय. प्रॉब्लेम थोडासा की स्लाइटली थोडीशी स्लो आहे विकेट, आणि त्याच्यामुळे शॉट मेकिंग तितकं सोपं नाही होत. सकाळच्या वेळेला पहिल्या 6-7 ओव्हरमध्ये तर चेंडू थोडासा खाली राहत होता, आणि त्याचमुळे शॉट्स तितके चांगले खेळता येत नाही. उन्हात ज्यावेळी ती खेळपट्टी तापते त्याच्यानंतर ती आणखीन चांगली होऊन जाते. लाल मातीचं विकेट. मोठा फटका, चेंडू निघून जाईल, रफू चक्कर होईल आणि चौकार लागते. जैसे हिंदी में कहा जाता है ना कि मुंबई की भीड़ में धक्का और मैच में चौका लगना बहुत जरूरी है. चौकार येतील त्याच वेळी तर मजा येईल, आणि चौकार आलाय. T20चा गेम चौकार षटकारांचाच आहे. या चौकारांनी संघाची धावसंख्या पुढे सरकेल, जाऊन पोहोचेल ती आता 68 वर. आणि 7 धावांचं एक पहिलं षटक असायला की ज्या 6 पेक्षा जास्त धावा आल्यात, आणि धावसंख्या झाली 68. 4 षटक शिल्लक आहेत. उर्वरित 4 षटकांमध्ये किती धावा येत आहेत ते पाहायचंय. 68 रन्स ऑन द स्कोर कार्ड. So 68 runs for the loss of 7 wickets. Now 687. यहाँ पर हमारे एडवोकेट आलिफ शेख है, और नंबर भी सर देखिए क्या आ गया, 786 आ गया आपके नाम के साथ. 6847 थोड़ा सा उल्टा हो गया, लेकिन वो नंबर आ जरूर गया. 6847. No, 6847. Advocate Arif Sheikh in all appreciation towards. Oh, what a shot that is, beautifully hit. Janardhan has come in, and Janardhan has. Look at Janardhan. Look at the running. That is why I say do not look at the height. He is the fighter. A pocket-sized dynamo. He's playing really well. A couple of runs added to the tournament, to the innings. 70 runs for the loss of 7 wickets. Short ball, that is beautifully played straight to the fielder though.
That was a boundary. Anything towards his right or left, that would have gone for a boundary. Sir, sir. Oh, that is a chance. Just one run. 70? So 71 runs on the scorecard, 3 runs in this over. Janardhan has come in and Janardhan has moved on to 7, I think. Yes, 7 runs, 2 doubles and 4 singles for 3 singles for Janardhan. Bhavesh is there with him. Bhavesh is playing on 26. He has played really well. Bhavesh Thakur, the brother of the captain. So he goes for the big one. इस टीम के कैप्टन है यशपाल ठाकुर जल्दी आउट हो गए, लेकिन उनके भाई वहां पर है भावेश ठाकुर। और कहा जाता है अगर भाई की टीम में अगर आप खेल रहे हो तो आपकी ताकत डबल हो जाती है। फिलहाल उनके भाई की टीम थोड़ी सी प्रॉब्लम में है और भाई को भाई बजाता है। असं म्हटलं जातं मराठीत सक्का भाऊ पक्का वैरी, पर यहाँ पर तो कुछ चीजें बदल चुकी है। ये भाई अपने भाई के लिए काम जरूर कर रहा है। Oh, what a shot again! Will it go all the? Will it travel? Good stop, good stop. But just one run. Bhavesh is not running that quickly. The score moves on to 72 now. Janardhan is running beautifully. Bhavesh is a little tired, but watch out for this man. Watch out for Janardhan. Janardhan has got 7 runs of 7 balls and he has shown some fire. 8वें नंबर पे आके has played really well. The score is 72. Beautifully played again. He has scored runs of every ball. That is what you need from a batter. Keep the scoreboard moving. हिंदी में मराठी में कहते हैं कि scoreboard चालता ठेवा, धावता ठेवा. Keep the scoreboard moving. Take those singles. The score is 73 now. 5 runs in this over. 3 overs remaining. 73 रन बन चुके हैं। इसमें एक 15 रन का अगर ओवर आ जाए या 10 से 12 रन का ओवर आ जाए तो आप 110 के पास पहुंचोगे या 100 के पास पहुंचोगे। 100 के पास अगर पहुंचो 105, 106 तो आप बना सकते। रियलिस्टिकली 73 है। मेरे हिसाब से अगर आप जाए तो ये 100 को स्कोर टच होना चाहिए, क्योंकि आउटफील्ड उतनी फास्ट है नहीं, तो आपका 100 मतलब 130 के बराबर है, बिकॉज उतनी क्विकली गेम ट्रैवल नहीं कर रहा है। तो आप अगर आप 100 रन भी बना ले तो एक 125 130 का टारगेट इसको आप लेके चलिए, बिकॉज ऑफ साइड में आउटफील्ड थोड़ी नया सीजन है, आउटफील्ड अगर थोड़ा सा स्मूथ कर दे तो ग्राउंड लाजवाब हो जाए। लेकिन आपको हरियाली भी चाहिए, तो आउटफील्ड में थोड़ा सा घास तो होना चाहिए। अगर वो घास निकाल दो तो हरियाली कम दिखाई देगी, तो एक के लिए एक चीज सैक्रिफाइस करनी पड़ेगी। जनार्दन पहला खराब शॉट, लेकिन जनार्दन ने स्पिरिट दिखाया है। ये पहला उनका बॉल है जहां पे वो टाइम नहीं कर पाए, कनेक्ट नहीं कर पाए, हर गेंद पे उन्होंने रन निकाले। तो यहाँ पर थोड़ा सा वो बड़ा हिट लगाने का प्रयास जरूर किया था। आखिर की 17 गेंदे हैं तो उसमें वो बड़े शॉट्स के लिए जाएंगे जरूर। शेवटचे 17 चेंडू शिल्लक आहेत, प्रत्येक चेंडूवर प्रहार करण्याचा प्रयत्न जरूर असेल, मात्र तो किती स्मार्टली केला जातो ते पाहायचं आहे। आता इथे रिव्हर्स शॉट खेळले जातील, एखाद्या वेळेस लॅप शॉट खेळला जाईल, स्वीप शॉट खेळला जाईल। इथे 2 धावा निश्चित मिळू शकतील। नाही, उमंग आहे तिकडे, चेंडू फिरला आणि चेंडू अगदी व्यवस्थित येऊन त्या खेळाडूच्या हातात गेला। उमंगनी गोलंदाजी चांगली केली। उमंगनी गोलंदाजी करताना 3रं षटक टाकलं, त्याच्यानंतर 7वं षटक टाकलं, 11वं टाकलं आणि 13वं टाकलं। मग त्याला अगदी सगळीकडे वापरलं गेलं एक एक ओव्हरच्या गॅप नंतर, आणि आता क्षेत्ररक्षण करतोय। आता गोलंदाजी मार्कवर याच्या शेवटचे 16 चेंडू आहेत, कमीत कमी 4 चौकार यायला पाहिजेत। मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न, स्लोअर डिलिव्हरी। भावेश 27 धावांवर खेळतोय खरा, परंतु भावेश एक हाती झुंज देतोय। भावेशच्या वैयक्तिक 50 धावा व्हावेत अशी इच्छा असेल, जर त्या झाल्या तर स्कोर 100चा पार जाईल। 15 चेंडू शिल्लक आहेत आणि भावेशला आता चौकार मारावे लागतील। डाऊन द ग्राउंड मारण्यापेक्षा हा शॉट चेंडू गरगर फिरेल जरूर। क्षेत्ररक्षण चांगलं घडतंय, ते चुका करत नाहीये क्षेत्ररक्षक, आणि नेमका त्याचाच फायदा होतोय क्षेत्ररक्षण करणाऱ्या संघाचा। कमीत कमी चुका केल्यात, किंबहुना एकही मिसफील्ड केलेली नाहीये, ते कौतुकास्पद आहे। कारण कॉर्पोरेट कंपनीच्या मॅचेस बघितल्या की आपण साधे झेल सुटताना दिसतात, आपल्याला मिसफील्ड होताना दिसतात, चेंडू हातातून निसटून चौकाराच्या दिशेने जाताना दिसतो, परंतु चांगल्या दर्जाचं क्रिकेट दाखवलंय सांताक्रुजच्या या संघाने। हा स्लोअर डिलिव्हरी, लेग ब्रेक टाकण्याचा प्रयत्न, पहिली धाव जोरात घेतली आहे। भावेश पण आता जोरात धावतोय। जनार्दन खूप क्विक आहे। जनार्दन बघा, अतिशय चांगला परफॉर्मन्स। प्रत्येक संघात एक भांडणारा प्लेयर असो, एक झुंजणारा प्लेयर असो, एक लढणारा प्लेयर असतो, तो सध्या या संघातला जनार्दन दिसतोय।
जबरदस्त खेळतो आपल्या संघासाठी. छोटी इनिंग्स आहे. आतापर्यंत एकही चौकार त्यांनी जरी मारला नसला तरी ज्या 9-10 धावा ज्या त्यांनी केल्यात त्या प्रत्येक धावत त्यांनी आपलं 100% दिलंय जरूर. प्रत्येक संघात एक असा धडपडीचा प्लेअर असतो. एक म्हणतात ना की प्रत्येक मंडळात एक धडपडीचा आणि एक धडाडीचा कार्यकर्ता असतो. तर धडपडीचे कार्यकर्ते धडाडीच्या कार्यकर्त्यांपेक्षा जास्त कामाचे. हा तसा धडपडीचा प्लेअर आहे. त्याच्यात गुणवत्ता तितकी नसली तरी इच्छाशक्ती आणि जिद्द आणि चिकाटी मात्र भरपूर आहे. सध्या तरी त्या चिकाटीच्या जोरावर तो आपल्या संघाला पुढे पुढे घेऊन जातोय खरा. चौकाराची अपेक्षा असणार आहे मात्र. आणि हा चौकार नशिबाची साथ मिळणार जरूर. चौकार जाईल का? नाही. हात पाय सगळ्याचा वापर करून अडवलाय त्याला जरूर रईसनी. या 2 धावा. स्कोर at the end of over number 18 is 79 runs. या षटकात 6 धावा आल्या. 79 runs on the scorecard. Just 2 overs remaining, 12 balls remaining. They would expect at least 21 runs in the next 12 balls. जनार्दन और भावेश अगर रुक जाते तो ये स्कोर पॉसिबल है. This is season 1 and we thank all the sponsors who have been a part of this tournament. This tournament has been proudly sponsored by different sponsors which we have, and sponsors from all the fields have supported us. Yes, the last 2 overs, 12 balls remaining. Expect some fireworks from Bhavesh and Janardhan. Bhavesh Thakur on one side, Janardhan on other. Janardhanचं पूर्ण नाव काय? आयडिया? धापळे. Janardhan Dhapre, Bhavesh Thakur. Oh, that is beautifully played. They take the first one quickly. Will they go for the second one? No. Janardhan is on strike. The score moves on to 80. Last 11 balls. They need to get close to 100 runs. It's a beautiful Saturday morning and nice breeze flowing through now. You can see the slight breeze flowing now, and it's not windy. It is not very hot even. It's a nice pleasant weather to play cricket. It's a beautiful weather where you can enjoy your cricket. Score moves on to 80. Oh, beautifully bowled, equally well played. He got it in the line. There is a chance of a second. Good work by the wicket keeper. The score moves on to 81. 81 runs on the scorecard. They need a boundary every over. If they get a boundary and singles, they get 9 runs in that over. If they get couple of boundaries, they're going to get 11 runs or 12 runs. That is what they should be looking. 2 boundaries every over. The score has moved on to 81. They need a boundary in this over. Beautiful Yorker. This is nicely bowled. That is how you bowl in the final overs. Either you bowl a full Yorker, you bowl a short ball, you bowl a slower ball, you bowl a leg cutters. That is all the variations which you need to put. The first ball was slightly on the legs. The second ball was exactly on the spot the bowler wanted. 82 the score moves on to. 3 singles in the first 3 balls. The bowler is doing his job. Now Samir bowling the 19th over. Janardhan, that is a couple in. यहाँ पे 2 run होने चाहिए. They have to go for the second one. Bhavesh is not good running at all. That's not good running. He should have gone for the first one quickly. The fielder was quite wide into that mid-wicket region. Maybe not even long on position. He was wide of that long on region. Mid-wicket region probably. 83 runs on the scorecard. First 4 balls, 4 singles, not acceptable. पूरी ताकत लगानी पड़ेगी वकील साहब यहाँ पे. ये आखिरी डेट है अभी. यहाँ पर रिजल्ट आ सकता है. Last 2 balls of the over. जनार्दन विल ही गो फॉर द सेकंड वन. जनार्दन हो तो 2 रन मुमकिन है. जनार्दन है तो मुमकिन है. देखिए छोटा सा प्लेयर है लेकिन उसकी जिद देखिए. 2 रन कंप्लीट. भावेश थक चुके हैं थोड़े. भावेश शुरू में बल्लेबाजी करने आए थे और उतना स्टैमिना इन सारे प्लेयर्स का नहीं होगा.
बिकॉज ये रोज नहीं खेलते, लेकिन ये जो हवा चल रही है वो शायद उनको थोड़ी सी एनर्जी ज्यादा दे दे। थोड़ा सा ह्यूमिड एरिया है यहाँ पे, ज्यादा पसीना आएगा बिकॉज पास में यहाँ पे समुंदर है, बैक वाटर्स ऑफ अरेबियन सी। Oh, good shot. That will run away for a boundary. No one's going to stop this one. This will run away for the first boundary of this over. As expected, four and five singles, 9 runs in that over. So they got 9 runs in this over. The score has moved on to 88. They would need at least 10 to 12 to reach 100 runs. Now these are the options which you can play in the last over. You go outside the off stump, leg stump, and try and open up the off side. You go and paddle sweep the ball in the fine leg region. You slog sweep the ball in the mid wicket region, or you play inside out cover shot. ये चार डायरेक्शंस में आपको रन ज्यादा मिलते हैं. अगर बॉलर पेस ज्यादा यूज कर रहा है, बाउंस कर रहा है, तो बिहाइंड पॉइंट आप उसको कट कर सकते हैं, ग्लाइड कर सकते हैं. अगर बॉल ओवर पिच डाल रहे हैं, यॉर्कर्स डाल रहे हैं, तो आप उसको इनसाइड द लाइन आके गेंद को फ्लिक कर सकते हैं. अगर बॉलर आपके बॉडी से क्लोज डाल रहा है तो एक पैडल स्वीप है, या आप उसको रैम शॉट करके वो शॉट्स खेल सकते हैं. अगर बॉलर आउटसाइड द ऑफ स्टंप डाल रहा है, इन कटिंग बॉल है, तो आप उसको कवर्स के ऊपर से मार सकते हैं. अगर बॉल आपके बॉडी में आ रहा है, अगर आप अच्छा फ्लिक कर सकते हो, तो आप वुडलैंड की बॉल को स्लॉग स्वीप कर सकते हो. बहुत ऑप्शंस होते हैं बैट्समैन के पास. सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपको राइट शॉट एग्जीक्यूट करना, और एंड में आप बैट घुमाओ, आपके एज को लग के रन आने दो, कैसे भी आने दो. रन और पैसा कैसे भी आए वकीलों को पता है, बटोरना बहुत इंपॉर्टेंट है. आखिर की 6 गेंदें. हाँ देखिए स्वीप शॉट, ये मैं कह रहा था, ये रैम शॉट स्वीप शॉट आप खेल सकते हैं. ये ऑप्शन एक उन्होंने ओपन कर दिया. ओवर पिच बॉल है, यॉर्कर डाल रहे हैं, आप स्वीप कर सकते हो. आप पोजीशन में आ जाओ और आप शॉट्स खेलो. रन बनते नहीं, रन बनाने पड़ते हैं. You will not get ready-made runs. You need to play your own shots. You have to manufacture, engineer, doctor your runs and get runs. और ये डॉक्टर करके, रन इंजीनियर करके, रन मैन्युफैक्चर करके चौका मारा है. एक कहते हैं कि शॉट मारना, एक चौका बनाना. ये बनाकर मारा हुआ शॉट था. ये गेंद अच्छी थी, गेंद की लाइन में आया, उसको यॉर्कर को फुल टॉस में कन्वर्ट किया और स्वीप किया. मैंने आते ही पता चल गया था जनार्दन में कुछ है. जनार्दन दे धनार्दन, हमारे ब्रॉडकास्टर ने उनका नाम बता दिया है. जनार्दन डाफड़े दे धनार्दन. जनार्दन अपना काम कर रही है, इज डूइंग हिज स्टफ. ही हैज गॉट द फर्स्ट बाउंड्री ऑफ द ओवर. द स्कोर मूव्स ऑन टू 92. अगर ये बल्लेबाज पहले आ जाए, मैंने यही कहा कि 8वें नंबर का बल्लेबाज खतरनाक होता है. पहले टाइम से ये कह रहा हूं. ये 7 विकेट जा चुके हैं. ओ स्लोअर बॉल, सुपर बॉलिंग, स्मार्ट बॉलिंग, स्लोअर डिलीवरी, कंप्लीटली फ्लमक्स. ये बॉलर के पास वो ऑप्शन, मैंने कहा वो लेग स्पिन डाल सकता है, वो ऑफ स्पिन डाल सकता है, लेग कटर्स डालेगा, यॉर्कर डालेगा. यॉर्कर में फंस गए और लेग ब्रेक में फंसा दिया. Yeah, that can happen. जनार्दन कोई बात नहीं, जनार्दन has done his bit. जनार्दन अपने इंडिविजुअल जो 17-18 रन बनाए उन्होंने, उनकी टीम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है. जनार्दन इज आउट, 8th विकेट डाउन on the score of 92 now. Last 4 balls. तो ये टीम जब अप्लॉज देती है ना आपको, आप जब बैटिंग करके आते हो, छोटी इनिंग्स करके आते हो, आपकी टीम जो आपके लिए तालियां बजाती है ना, वो किसी बैंक अकाउंट में जो अमाउंट डिपॉजिट है उससे भी ज्यादा खुशी देती है. आपके पास कितने पैसे, आप कितने अमीर हो, उससे वो कुछ मायना नहीं रखता. जब आप अपनी टीम के लिए कुछ अच्छा करते हो, आपके दोस्त आपके लिए तालियां बजाते हैं ना, वो खुशी कुछ और लेवल की है. तो एवरीवन हु हैज प्लेड क्रिकेट अंडरस्टैंड्स व्हेन योर टीम अप्रिशिएट्स, व्हेन एवरीबॉडी अप्रिशिएट्स सम गुड वर्क डन बाय यू ऑन द क्रिकेटिंग ग्राउंड, दैट गिव यू इमेंस सेटिस्फैक्शन. आप कितने भी अमीर क्यों ना हो, आप रन खरीद नहीं सकते. यू नीड टू स्कोर दोस रन. राइट नाउ द स्कोर इज 92 runs on the scorecard. The last 4 balls. अभी ऑलराउंडर्स आ चुके हैं. जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप को आप देखने जब बैटिंग करने जब आते हैं, तो प्रॉपर बैट्समैन से भी ज्यादा उनका स्वैग होता है. वो अपने आप को अच्छे प्रॉपर बैट्समैन ही समझते हैं, एंड वैसे ही होना चाहिए. एवरी बॉलर हैज टू थिंक लाइक दैट, लाइक ही इज अ वेरी गुड बैट्समैन. हाँ, ये गेंद को फ्लिक किया. देखो ये स्पाइन लेग के रीजन को एक्सप्लॉइट करेंगे. सूर्य कुमार यादव का पहला क्रिकेटिंग शॉट इंटरनेशनल करियर में था. उन्होंने जो रैम शॉट खेला था स्क्वायर लेग रीजन में, पहला शॉट फेस किया था और पहले गेंद पे छक्का मारा था. बिल्कुल ऐसी गेंद थी, लेकिन वो गेंद काफी पीछे गई थी, 70-75 मीटर थी. तो वो शॉट से शुरुआत जरूर की है. 2 रन ऐड किए. स्कोर मूव्स ऑन टू 94 नाउ. 3 balls रिमेनिंग. अब की बार 100 के पार. यहाँ पे बीजेपी का हम प्रचार नहीं कर रहे, लेकिन अगर ये यहाँ पे एक चौका आ जाए तो 100 रन पूरे हो जाएंगे. दे कैन गेट स्कोर पास स्कोर ऑफ 100. दे नीड अ बाउंड्री इन दैट. 3 गेंदे शेष है, एक चौका आ जाए तो स्कोर 100 के पार चला जाएगा. लेट्स सी वेदर इट कैन हैपन. ही गोस फॉर द बिग वन. ये 8, 9 और 10 नंबर के प्लेयर, वेल ट्राइड, एब्सोल्युटली वेल ट्राइड, बट दैट्स अ बाउंड्री. That's a boundary which they needed. The score moves on to 98.
10 रन आ चुके इस ओवर में अब तक, 4 गेंदों में 10 रन आ चुके, एक चौका, फिर एक विकेट, फिर डबल, फिर एक चौका। और ये जो 8, 9, 10 नंबर के प्लेयर्स है ना, इनकी बैटिंग लाइनअप ये कॉर्पोरेट टूर्नामेंट में बदल जाती है। 7, 8, 9 वाले प्लेयर बाद में अपने आप पहले 5 में आ जाते हैं, उनको अपना परफॉर्मेंस दिखाना पड़ता है। ये दोनों प्लेयर्स इन्होंने दिखा दिया है। 98, एक्सपेक्ट अ सिक्सर नाउ। अभी तक छक्का नहीं लगा मैच में। ये चौका जाएगा, कोई नहीं रोक पाएगा। व्हाट अ शॉट दैट इज, इट्स अ बाउंड्री। द स्कोर मूव्स ऑन टू 100 नाउ, 102 नाउ। लास्ट 3 ओवर्स में अब तक 29 रन आए और अभी भी 2 गेंदे शेष है। लास्ट बॉल, yeah, that's the last ball. First ball boundary, then a wicket, then a couple, then a boundary. 2 boundaries by this man. 10 runs in 3 balls. Last ball, 102 runs. That was a harsh call, difficult call. ये शायद अब ये नया रूल आया आईसीसी का, हर साल अक्टूबर 1 से रूल्स चेंज होते हैं। तो उसमें इस बार ऐसे रूल है कि अगर आप स्टैंडिंग पोजीशन में आप अंदर आ जाते हो और गेंद वहां से निकल जाती है, भले वो लेग साइड में, उसको वाइड दी नहीं जाती है। 103 रन, जब आप पोजीशन में हो, पोजीशन काउंट की जाती है। आप कहां पर खड़े हो, शॉट खेलते हो, वही नहीं। ओ ये 6 लगेगा शायद पहला। नो, 1 बाउंस 4। The score is 107. 108 is the target. Fantastic batting in the last 3 overs. They got 35 runs in the last 3 overs. 73 runs in the first 17 overs. They got 35 in the last 3. The intent was the important word. They started very slowly. That was a catastrophic middle overs, and the end was brilliant. The start wasn't that great. The middle part was horrific, but the end was terrific. It was a fantastic last 3 overs in which they got 35 overs. A brilliant last over in which they got 3 boundaries, in fact 4 boundaries, a couple. अब ये नंबर 9 का बैट्समैन नंबर 1 के बैट्समैन से अच्छा है। अब ये बंदा नया होगा, नया लॉयर होगा, उसकी उतनी पहुंच नहीं होगी, इसलिए बैटिंग नीचे आई होगी। अगली बार ये पहले 4 में जरूर दिखेगा। Let's see what's going to happen in the next 20 overs after a short break. Securing your future requires just one thing: wealth. We help you plan. And you need a wealth plan, tailor-made for your exclusive needs. Tata Capital Wealth is a reliable partner. Talk to us. You'll see, you can count on us. Securing your future requires just one thing: wealth. We help you plan. And you need a wealth plan, tailor-made for your exclusive needs. Tata Capital Wealth is a reliable partner. Talk to us. You'll see, you can count on us. Securing your future requires just one thing: wealth. We help you plan. And you need a wealth plan, tailor-made for your exclusive needs. Tata Capital Wealth is a reliable partner. Talk to us. You'll see, you can count on us. Securing your future requires just one thing: wealth. We help you plan.
And you need a wealth plan, tailor-made for your exclusive needs. Tata Capital Wealth is a reliable partner. Talk to us. You see, you can count on us. Securing your future requires just one thing: wealth. We help you plan. And you need a wealth plan, tailor-made for your exclusive needs. Tata Capital Wealth is a reliable partner. Talk to us. You see, you can count on us. Securing your future requires just one thing: wealth. We help you plan. And you need a wealth plan, tailor-made for your exclusive needs. Tata Capital Wealth is a reliable partner. Talk to us. You see, you can count on us. Securing your future requires just one thing: wealth. We help you plan. And you need a wealth plan, tailor-made for your exclusive needs. Tata Capital Wealth is a reliable partner. Talk to us. You see, you can count on us. Securing your future requires just one thing: wealth. We help you plan. And you need a wealth plan, tailor-made for your exclusive needs. Tata Capital Wealth is a reliable partner. Talk to us. You see, you can count on us. Securing your future requires just one thing: wealth. We help you plan. And you need a wealth plan, tailor-made for your exclusive needs. Tata Capital Wealth is a reliable partner. Talk to us. You see, you can count on us. Securing your future requires just one thing: wealth. We help you plan. And you need a wealth plan, tailor-made for your exclusive needs. Tata Capital Wealth is a reliable partner. Talk to us. You see, you can count on us. Securing your future requires just one thing: wealth. We help you plan. And you need a wealth plan, tailor-made for your exclusive needs. Tata Capital Wealth is a reliable partner. Talk to us. You see, you can count on us. Securing your future requires just one thing: wealth. We help you plan. And you need a wealth plan, tailor-made for your exclusive needs.
Tata Capital Wealth is a reliable partner. Talk to us. You see, you can count on us. Securing your future requires just one thing: wealth. We help you plan. And you need a wealth plan, tailor-made for your exclusive needs. Tata Capital Wealth is a reliable partner. Talk to us. You see, you can count on us. Securing your future requires just one thing: wealth. We help you plan. And you need a wealth plan, tailor-made for your exclusive needs. Tata Capital Wealth is a reliable partner. Talk to us. You see, you can count on us. Securing your future requires just one thing: wealth. We help you plan.
Yes, MAPL Season 1, this is the first match of the tournament. This match is being played in three different destinations, and this is match number 1. Beautifully played off the front foot, in fact, off the back foot into the covers. The ball is racing away. That's a quick outfield over there, and that would be. Is that a boundary? We'll wait for the confirmation. No. So, if you look at the ground right now, towards the right of your screen, that is on the offside, the outfield is lightning quick. On the leg side, it's not that quick. The target is 108. You may feel it's a smaller target, but I strongly think it's a target which is can be a challenging one because the outfield is quite heavy on one side. It is razor quick on the offside, but leg side, it's not that quick. So if you bowl well, if you get a few wickets, you can challenge. That is beautifully bowled. So MAPL season 1, match number 1. That's nicely bowled. Keeping the ball in the right areas is the mantra. So batting would be slightly easy now. It was early morning, and early morning it was difficult to score a few runs because the wicket was slightly damp. Right now, the wicket has eased up. The ball is bouncing beautifully. There is no uneven bounce. The ball is not keeping low now. It is coming at a nice stump height, so you can play all your shots right now. But good comeback after the ball. First ball was hit for a few runs. That is nicely bowled. Oh, great stop. That is fantastic work. That is Janardhan again. Janardhan De Dhanadhan. He is the man who has batted beautifully. He has fielded really well, and he has kept the team in hunt. It was Janardhan and Bhavish's small little innings and the cameo which came at the end where they got 16 runs in the last over that has just got the match back into balance now. In fact, they got 18 runs in the last over, 4 fours and a couple. That is beautifully bowled. Fantastic first over. They needed that. When you're defending a smallish total, you need to start well with the ball. But as a batting team, they would always strongly feel that you don't lose your wickets in the first 6 overs, score 30 odd runs, that would be fine. Oh, that's beautifully played. A single.
अरे यार ऑफ ठेवली. या ओव्हरला नाही पण. Yes, 5 runs on the scorecard, 108 runs is what they manage in the first 20. You would say a very subpar score or low total, but this total can be defended if you bowl well. That is nicely bowled. Umang Sheth seems to be a proper batsman, almost like Washington Sundar. Washington Sundar bowls off break. Washington Sundar is tall. This man also is an off break bowler. Washington Sundar is a left hand batsman. He is also a left hand batsman. When what Washington Sundar is to the Indian team, this guy is exactly to this team. In fact, a little bit more than Washington Sundar because he is their opening batter. Oh, what a shot that is. That is how you play in the power play. Play up and over the field. Try and take advantage of those field restrictions. He takes a couple. The score moves on to 7, opens his account. 7 runs on the scorecard. So 7 runs on the scorecard, and that is the first runs for Umang Seth. That was beautifully driven, just like we have a Royal Enfield, one of our sponsors for this tournament, Voyage Motors. We also have a litigation company, Pro Vakil, which is one of our sponsors. Tata Vakil is our sponsors which comes, so all kind of different sponsors which we have got. Litigation company, from one from financial institution. We have a, oh, that is beautifully done, good. Oh, the ball was always going to defeat him. The ball was swirling around, and once the ball drops with that angle, the ball is going to turn around in different directions. He had to either go for a catch or he had to station himself properly behind the ball. It was a difficult chance, but he should have gone for the catch. You need your best fielder to be stationed at such situations. The score moves on to 11 with that boundary. Watch out for Umang. If Umang stays there for 6 7 overs, he's going to chop off major part of the score. He gets 40 runs in the first 6 overs, they're going to win it easily. They need Umang to stay there for some time. I can't bowl there. It's a gift, but unfortunately for the batting team, fortunately for the batting team, it is just 1 run. The score moves on to 12 now. It's a productive over so far. First 2 overs just 5 runs, and the next over so far they have conceded 7 runs. So 12 runs on the scorecard. Mumbai Advocates Premier League Season 1. This is an auction based tournament where you had the owners, the two owners for this tournament. This first match, it is Advocate Prakash Rohira and Advocate Kushal Moore, the owners of the two teams. Ashwath Nair would be the happy captain right now of the Santacru Lions. The Santacru Lions owner Prakash Rohira would be happy. It was slightly going down. In fact, it was going down the leg by a big margin. That's the first extra of the innings. The score moves on to 13 with that leg by. Yashpal Thakur, the captain of the Bandra Lions, in fact, Bandra Sonics. And Santa Cruz Lions have Ashwath Nair, who bowled beautifully with his left arm spin. Also took a fantastic catch, one of the best catches of the day. In fact, that would be one of the best catches of the tournament. Unfortunately, that wasn't picked up by a cameraman because there was slight technical glitch that can always happen during a match. The best moment just missed out. But that is not a good ball. That's not a good shot either. That wasn't connected well. In fact, he missed out on a boundary. That was a boundary ball which he missed out. Not good bowling. That wasn't a good shot either. So 3 overs and 14 runs on the scorecard. First over 2 runs, second over 3 runs, and they've got 9 runs in this over. A boundary, a couple of runs, and a singles in that over. तो पहले 3 ओवर्स में रन कैसे आए देखिए पहले ओवर में 2 रन दूसरे ओवर में 3 रन तीसरे ओवर में रन आए 9 तो ये आगे बढ़ते जा रहे हैं 2 से 3 का प्रमोशन हुआ 3 से अब 9 रन तो इसका जो प्रमुख कारण है जो बल्लेबाज आपके स्क्रीन के ऊपर है इस बल्लेबाज ने आते ही 6 गेंदों में अपने लिए 9 रन जोड़ दिए और अपनी टीम को आगे ले जाने का काम उन्होंने किया है नंबर 999 उमंग सेठ
Bowlers now. Right arm over the wicket. Bowling from Mankur then. Beautifully played. The score moves on to 15. In the first few overs, they were good because they bowled the line outside the off stump, just in that fourth stump line. This over, in fact, the last over and this over, they are trying to bowl on the legs. If you're going to bowl on the legs, you are going to concede runs. गोलंदाजीची शैली बघा ऑफस्टमच्या बाहेर गोलंदाजी केली शिस्तबद्ध गोलंदाजी केली तरच धावा नियंत्रित करता येतील. जर तुम्ही गोलंदाजी लेग स्टंपवर केलात मिडल स्टंपवर केलात तर तुम्हाला धावा काढणारच. फलंदाज चांगली फलंदाजी करतील सहज धावा गावा करतील. अतिशय अप्रतिम फटका या शॉट मध्ये जनार्दन लाईव्ह वायर आहे बघा. जनार्दन फलंदाजी 8व्या क्रमांकावर करायला आले त्यानंतर जी धावसंख्या 70-80 पण वाटत नव्हती ती 100च्या पार गेली. त्याच्यासोबत त्याच्या इतर फलंदाजांनी साथ जरूर दिली. 9व्या क्रमांकावर येणारा फलंदाज आणि 8व्या क्रमांकावर येणाऱ्या फलंदाजांनी चित्र पालटलं. त्यांच्या ज्या 17-17 वैयक्तिक धावा होत्या त्याच्याचमुळे हा संघ आता चांगल्या परिस्थितीत बघा तो पॉइंटला होता आणि पुन्हा पॉइंटला गेलाय तो डावखुऱ्या फलंदाजासाठी आणि त्याचं अंतर त्यांनी कापलंय ते जवळपास 50 मीटर ते अगदी क्विक टाइम मध्ये. म्हणजे एक महत्वाचा खेळाडू जसा युवराज सिंग आपल्या संघासाठी असायचा जॉन्टी रोड्स असायचा रिकी पॉन्टिंग असा पॉइंटवरचा खेळाडू खूप महत्वाचा. खराब चेंडू फक्त फ्लिक केलाय. फर्स्ट सिक्सर ऑफ एपीएल इनफैक्ट एमएपीएल सीजन 1 मुंबई एडवोकेट्स प्रीमियर लीग का पहला छक्का अगर किसी के नाम आएगा तो वो होगा हमारे वॉशिंगटन सुंदर इस टीम के उमंग सेठ. उमंग सेठ नाइसली एक फ्लिक होता बस टाइमिंग था गेंद को फ्लिक किया है बस. एंड द बेस्ट पार्ट वाज द हाइट एट विच द बॉल रीच्ड हिम. वो जो बाउंस था बाउंस को लेकर उन्होंने छक्का मारा. फैंटास्टिक शॉट दैट्स द फर्स्ट सिक्सर. That is nicely played off the back foot. Super stop. Janardhan couldn't stop it completely, but he's a very good fielder over there. तो पहला छक्का अगर किसी के नाम आया इस टूर्नामेंट का एमएपीएल सीजन 1 के तो दैट्स गोइंग टू बी द मैन ऑन द नॉन स्ट्राइकिंग एंड उमंग सेठ. पहला प्यार पहला पगार पहला बिजनेस असाइनमेंट और पहला छक्का हमेशा याद रहेगा. So this man, he would remember this first sixer was hit from his bat. Yash Sharma comes on strike now. Yash Sharma, he was struggling in the beginning of the innings. After that, he has found his mojo. He is trying to hit the ball in the right areas, playing well off the back foot and front foot both. Oh, he went for the big booming drive. Yash is trying to go for his big shots. The only problem is his back foot isn't moving. He's not coming into the line of the ball. He's trying to hit the ball from its base. And once you put the ball outside the off stump, Yash is not going to reach there. He needs to come, maybe shuffle up and come inside the line of the ball, maybe closer towards the stump. Maybe the guard which he has taken has to change. The leg stump guard can be changed to the middle stump. Yeah, he shuffled himself, but that was beautifully bowled. And a good call of no. Clear no is always good. Wait, maybe it's not are not the right calls. A clear no is always good, or yes or a no. The score at the end of 4 overs is 23. 2 runs in the first over, 3 runs in the second over, 9 runs in the third and fourth over each. In the first power play, the Bandra Sonics got 21 runs, but they lost 3 wickets. These guys have managed 23 runs, and they have not lost a wicket. So that is still their advantage in pursuit of 109. They have begun really well. When you have a look at the sponsors, we have sponsors. We have a doctor who's sponsoring. In fact, Dr. Valery Chuchak. I don't know which field he or she is from. Sula, Fasten Up, Image Design Studio, Royal Trading, Total Sports, DG Legal, Voyage Motors, Tata Capital, Pro Vakil. So we have a litigation company who's one of our major sponsors. We have Tata Capital, one of the leading financial institutions as the our sponsors. We also have Royal Enfield, Voyage Motors, one of the top brands when it comes to having when you talk about two-wheelers or high-end bikes. Also, we have DigiLegal, another firm associated with legal issues. Total Sports, a sports company. Also, we have Royal Trading, somebody who works in share, and also Image Design Institute, somebody who's working in the field of art. Fasten Up, Sula, Dr. Wallis, all sponsors from different fields are a part of this fantastic tournament. We thank all the sponsors once again. So this is a tournament for the advocates.
These are the people who are very much important for you in any field you have. You need lawyers. When you are in trouble, you need lawyers. And every time you meet a lawyer or you meet your fighting party or opposite party, you say, I'll see you on court, or I will see you in court, they say. Court mein milte hain, they say. That is how you challenge somebody who is not following law. यहाँ पर these lawyers are going to say, let's see you on ground. Ground पे देखते हैं एक दूसरे को. That is what the lawyers have told each other. Janardhan comes into ball. Oh, Janardhan, Muralidharan of the Advocates. Look at the way the ball turned. It was wide, but look at the turn which he got. He is the Muralidharan of the Advocates. Now, fast, quick off-break balls. He cannot turn as what Muralidharan used to do, but that kind of action, a busy action, a different action, an off-spinner's action, but bowling off-spinner against left-stander is the best option. That is nicely bowled, but equally well played. Good call of no. Seems to be a very compact batsman. Umesh has a very strong technique, can play well against the fast bowlers, can play very well against the spinners. He has played very well on the front foot and also he's managed balls on the back foot also really well. That is, oh, that's a brute of a delivery. Superb line, superb length, and the bounce and the turn which he got, absolutely perfect. On the off and middle, in fact, on the middle and leg, pitched on the right length, right speed, and the ball spun away. Beautiful bowling. That was a peach of a delivery. Oh, not good wicket keeping. The ball's going to run away. Will that be 4 byes? No. In fact, why it's given? Oh, that's a very harsh call. That's a very harsh call. I don't think that was a wide, but that's fine. That is what the umpire saw. That is what the umpires have given. 3 wides. Umpires have given their decisions quite immaculately. Oh, beautiful bowling. That was nicely bowled. Beautifully driven, though. Good cricket all round. Nice right given to the bowler. Good trajectory, right pace to bowl the ball with. A single. Oh, he is doing it meticulously. That is what is the need of the hour. A mixture of caution and aggression is Umang Seth. He is doing it absolutely meticulously, almost like an algorithm, a program fitted to do the job. Yash is trying to get his mojo right. Again, a very busy batsman. He's a batsman who plays really well. Somehow has just not got his touch in this match. He's missed out a few balls on the offside. Once he gets that first boundary, things may start moving. Now, that is what I was talking about. That's his first proper connection. And that will please him and his teammates because he is one of their most important players, Yash Sharma. And once you get the nice cover drive, your confidence gets manifolded. So score at the end of 5 overs is exactly 29. 29 runs on the scorecard without losing a wicket. They got 6 runs in this over and they had 3 wides in it.
was a fantastic ball, beautifully bowled. And left arm spinners will always create that magic. When you have a leg spinner in your team, you have a left arm spinner in your team. Kuldeep Yadav is left arm Chinaman. He's not Kuldeep Yadav kind of bowler. He's more of Ravindra Jadeja kind of bowler with that kind of action. See, look at him. Starts off and it gives a rip, almost like Ravindra Jadeja. His action initial stages is trying to bowl this quick left arm spinners, and they need somebody to do the magic. It might be Yash. Oh, that's a brute of a delivery. Super bowling. We haven't seen a maiden as yet. This might be a maiden over. Watch out for a maiden over. Three dot balls so far. We have seen overs of 1 run each twice from the opening bowler Mayur Matre. You might just see a maiden over from this man. Oh, that's a beautiful ball. Fantastic ball. That was a quicker one. Look at the turn which he gets. Batsman absolutely had no clue. He went on for the big shot on towards the leg side. The ball turned the other way. He thought it's a quicker one coming in. It was a normal ball which went away. The ball which will come in will be a problem now. The Chinaman which comes in will be a problem. The armor, the quicker one. Oh, that's a big appeal. That's a vociferous appeal. And I think that would be a leg by. Leg by. That ball was drifting down. It was slightly high. That is what the umpire would say. Enough doubt for him to negate. Yes, that is what the umpire is indicating. Moving down leg and slightly high. But that was close. That was close because he built up that wicket. The first few balls he defeated him. Fourth ball, the ball went away and he went for that armor ball which the ball comes in, slides in. Superb setup by the bowler. 5 dot balls, I would say. Still 5 dot balls. This might be the first maiden over of the match. He has not conceded a run. अभी तक एक भी रन बैट से आया नहीं है. ये शायद पहला मेडन ओवर होगा इस इनिंग्स का, इस मैच का, इस टूर्नामेंट का. ऑफ कोर्स बाकी जगह भी टूर्नामेंट्स में मैचेस हो रहे हैं 2 जगह पे और, लेकिन शायद ये पहला मेडन ओवर होगा इस टूर्नामेंट का. लास्ट बॉल. सो अथर्व गेंदबाजी का, अथर्व मतलब गणपति बापा, तो शुभ बातें हो चुकी है उनके लिए. गणपति बापा का नाम है. देखते गणपति बापा से पहला मेडन ओवर आता है क्या. बॉलिंग एक्शन देखिए, रविंद्र जडेजा की याद दिला रहे. यस, द फर्स्ट मेडन ओवर बीइंग बोल्ड बाय अथर्व. फैंटास्टिक बॉलिंग. इस टूर्नामेंट का, इस मैच का पहला मेडन ओवर. ये पहला सीजन है और इस पहले सीजन में जो स्पॉन्सर्स ने हमें जो सपोर्ट किया है, बिकॉज आप टूर्नामेंट में एस्टेब्लिश हुआ था, सारे स्पॉन्सर्स आएंगे, लेकिन ये स्पॉन्सर्स है, दिस आर स्पॉन्सर्स व्हिच हैव सपोर्टेड अस इन आवर डेब्यू टूर्नामेंट. So MAPL would deeply thank everyone who has been a part of this tournament. Pro Vakil, Tata Capital, Royal Enfield, Voyage Motors, DigiLegal, Total Sports, Royal Trading, Image Design Studio, Fasten Up, Sula, Dr. Valari Suchak and Akash Marvels. तो ये जो पर्पल में जो टीम दिख रही है आपके सामने और येलो में जो एक सेंटा क्रूज लायंस और उनके ऑपोजिट वाली टीम है बैंड्रा सोनिक्स. फिलहाल सेंटा क्रूज लायन के लिए सारी चीजें जा रही है, लेकिन जो गेंदबाजी अथर्व ने की थी दैट वाज फैबुलस. हर टीम में एक गणपति पापा के नाम का प्लेयर होता है. मयूर ले लो आप, अथर्व ले लो, ये सारे गणपति पापा के नाम से, और ये सारे नाम का एक प्लेयर तो आपके टीम में रहेगा. और फिलहाल तो उन्होंने काम कर दिया. और एक गेंदबाज जिन्होंने काफी अच्छा काम किया है, भगवान का नाम है और काम भी बहुत बढ़िया कर रहे हैं, वो है जनार्दन. तो जनार्दन, he has come into ball and he has bowled the first over in which he considered just 4 runs, जिसमें से 3 वाइड से जो क्लोज वाइड था और अंपायर ने वो वाइड करार दिया गया. एक 50-50 कॉल था जो उनके खिलाफ गया था. और एक अच्छा गेंदबाज, ऑफ ब्रेक गेंदबाज, दूसरा लेफ्ट आर्म स्पिनर, ये दोनों स्पिनर्स इनको टीम में वापस, मैच में वापस ले आ सकते हैं. लेकिन एक भी विकेट नहीं गया. शायद इस ओवर में विकेट आ जाए. यश शर्मा बड़े शॉट के लिए जाने के चक्कर में विकेट दे सकते हैं अपना. वो स्क्वायर कट खेलना चाहते थे बैकफुट पे जाकर. स्कोरबोर्ड रुक चुका है वहां पर 29 पर. चांस है विकेट का. फर्स्ट विकेट ड्रॉप्ड. पूरा सेटअप हो चुका था. ऐसे कहा था कि इस ओवर में विकेट जा सकता है, विकेट जा सकता था, बिकॉज प्रेशर बिल्डअप हुआ था और सबसे अच्छा खिलाड़ी, सबसे भरोसेमंद खिलाड़ी अथर्व, उसी से कैच छूट गए.
कहा जाता है ना, धोखा वहीं पे होता है जहाँ पे सबसे ज्यादा भरोसा होता है। सबसे भरोसेमंद खिलाड़ी ने वो कैच ड्रॉप कर दी। कोई भी कैच आसान नहीं होती है, और उतनी आसान थी भी नहीं कैच, फ्लैट थी, हार्ड थी। और ये प्रोफेशनल प्लेयर्स के लिए आसान हो, जो रोज खेलने वाले प्लेयर्स नहीं है उनके लिए कैच मुश्किल थी, लेकिन ये कैच पकड़ सकते थे। ये रिवर्स कप ऑस्ट्रेलियन पद्धति से कैच पकड़ने गए और गेंद हाथ से पॉप आउट हो गई, और सब कुछ अच्छा किया उन्होंने, बस ही डिड नॉट होल्ड ऑन टू द बॉल, वो कैच कंप्लीट नहीं कर पाए। उमंग स्मार्ट है, उमंग की विकेट अगर आ जाए तो लगभग दो बैट्समैन आउट लेने जैसा है। उमंग काफी आसानी से खेल रहे हैं, ही इज प्लेइंग इट एब्सोल्यूट विद एब्सोल्यूट ईज। जब रन काफी आसानी से बने, बैट्समैन को अगर मुश्किल ना आए तो समझ जाओ कि वो आपके लिए खतरे की घंटी है। आराम से रन बना रहे हैं उमंग, एक तरफ थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं संजय यश शर्मा, लेकिन यश उनके प्रीमियर बल्लेबाजों में से एक है। यश is struggling but he's taking advice from his partner, that is always good। दोपहर की चाय और बड़ों की राय हमेशा इंपॉर्टेंट होती है। ओ फैंटास्टिक चेंज ऑफ पेस, चेंज ऑफ लाइन, चेंज ऑफ लेंथ आई वुड से। अपनी गति को बदला, अपनी दिशा को बदला, और जिस लेंथ पे गेंद, जो लंबाई थी गेंद की, जो शॉर्ट गेंद की थी, इस बार वो पूरी गेंद डाली थी। फैंटास्टिक बॉलिंग, दैट इज स्मार्ट बॉलिंग। काफी दूर थी वो गेंद, काफी दूर थी वो गेंद, और यही हम लोग कर रहे हैं मुंबई में, अपने अपने सपनों को चेस करते हैं। फिलहाल गेंदबाज वो कैच को चेस कर रहा था। इट्स अ सिटी ऑफ ड्रीम्स जैसे, एंड इस शहर में सारे लोग अपने सपने पूरे आते हैं। एडवोकेट्स भी काफी बड़े बड़े सपने लेके आते होंगे, उनके करियर्स के बारे में, उनके फाइनेंशियल, सोशल और करियर के स्टेटस के लिए। क्रिकेट का गेम भी वैसे है, एवरीबॉडी इज चेसिंग देयर ड्रीम्स। ये जो टूर्नामेंट है, जिन्होंने जिन्होंने भी इनिशिएटिव लिया है, दे हैव डन अ ग्रेट जॉब, बिकॉज टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करना मतलब घर में एक शादी के ऑर्गेनाइज की तरह होता है। काफ़ी मेहनत लेनी पड़ती है, काफ़ी चीज़ें, काफ़ी फैक्टर्स उसमें उनको देखने पड़ते हैं। और ये जो सारे प्लेयर्स है, उनकी लाइफ काफ़ी कॉम्पिटिटिव फील्ड में है। वकील होना आसान नहीं होता, दे हैव टू डू अ लॉट टू स्टे इन द इंडस्ट्री। और उस टाइम में से अगर आपको टाइम मिले, और अपना ये जो अपना पहला प्यार है क्रिकेट के लिए, अगर वो आ जाए ग्राउंड पे, देयर इज नथिंग लाइक इट। सो जो भी ऑर्गेनाइजर्स हैं जिन्होंने इनिशिएटिव लिया है, हैट्स ऑफ टू देम टू गेट एन ऑक्शन बेस्ड टूर्नामेंट गोइंग विद 8 टीम्स फॉर ऑल द बिजी लॉयर्स। आज सैटरडे है तो कोर्ट चलेगा, और उस वक्त भी अगर वो टाइम निकाल रहे हैं तो दैट इज ऑलवेज गुड। तो शायद अगले सैटरडे भी कोई प्लेस अवेलेबल नहीं होंगी, इंपॉर्टेंट उनकी हियरिंग होगी, तो उनको वहां पर रुकना पड़े। तो दैट ऑल फैक्टर्स टेकन इनटू कंसिडरेशन, these guys have done a great job। Score right now has moved on to just 4 runs in that over, 33 runs। The bowler who bowled the maiden over, Atharva, number 9, comes into bowl। That is the first run. That was a short ball। चिन्मय, कौस्तुभानी, सूरज। तो गाइस, चिन्मय, कौस्तुभ, सूरज। चिन्मय है, कौस्तुभ है, सूरज है। देखिए इनके नाम भी देख लो, एक गणपति बप्पा का नाम है, एक सूरज का नाम है, दूसरा नाम भी सूरज का ही है। कौस्तुभ का भी अगर मतलब निकाल लो आप, सूरज। ये दो लोग हैं जिन्होंने रोशनी डाली इस टूर्नामेंट। चिन्मय, किसी भी काम करते हो हम भगवान गणपति बप्पा की पूजा करते हैं, ये तीनों का कंट्रीब्यूशन रहा है। इनके जैसे नाम है वैसे उन्होंने काम भी किया है। चिन्मय, कौस्तुभ और सूरज ने, इनकी वजह से आज ये टूर्नामेंट खेली जा रही है। बिकॉज पहला कदम लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज इट इज ऑलवेज सेड व्हेन यू गो फॉर अ बिग डिस्टेंस, दैट फर्स्ट स्टेप इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट। इफ यू वांट टू वॉक अ माइल, यू नीड टू टेक दैट फर्स्ट स्टेप। पहला कदम बढ़ाना जरूरी है। चिन्मय ने, कौस्तुभ ने और सूरज ने वो काम किया है। तो kudos to these three guys, they have taken the initiative of organizing a tournament for the advocates, which they have a very tight schedule, they have a lot of work pressure। और उस वर्क प्रेशर में वक्त निकाल कर इन एडवोकेट्स के लिए ये उनका सबसे पसंदीदा गेम ऑर्गेनाइज करना, हैट्स ऑफ टू यू गाइस। दैट वाज नाइसली बोल। ये इस ओवर में थोड़ी सी शॉर्ट गेंद कर रहे हैं और थोड़ा तेजी से डाल रहे हैं। पहला ओवर उनका मेडन ओवर इसलिए गया था बिकॉज वो गेंद को फ्लाइट दे रहे थे, गेंद की लाइन चेंज कर रहे थे, गेंद की लेंथ चेंज कर रहे थे, जिसमें कई बार वो गेंद उन्होंने गेंद को टर्न करवाया, ऑफ स्टंप के बाहर रखा।
ये चैलेंज डिफिकल्ट है। लेफ्टी अगेंस्ट लेफ्टी बहुत मुश्किल होता है। इंटरनेशनल क्रिकेट में अगर लेफ्ट आर्म बॉलर है और लेफ्ट आर्म बैट्समैन है तो लेफ्ट आर्म बॉलर को लाते ही नहीं है गेंदबाजी करने के लिए जब तक लेफ्टी बैट्समैन आउट ना हो जाए, बिकॉज लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन लेफ्ट हैंडेड बॉलर्स को बहुत बुरी तरह पिटाई करता है। याद है वो मैच अक्षर पटेल माइकल हसी ने जब 4 छक्के लगाए थे वर्ल्ड कप की मैच में। ये चलो, गुड वर्क मैं कहूंगा। 2 रन जरूर मिलेंगे यहाँ पे। स्कोर 38 रन, 5 रन, 5 रन आ चुके हैं इस ओवर में अब तक। 38 runs on the scorecard. Atharva versus Umang. Best versus best. Oh, that's a beautiful sweep shot. What a cracking hit. That will run away. आउटफील्ड थोड़ी सी फास्ट है और ये जो फील्डर है मिड विकेट के वो क्रिकेट से ज्यादा फुटबॉल में ज्यादा विश्वास रखते हैं। दोनों ही गेंदे पहले राइट फुट से रोकी फिर बाद में लेफ्ट फुट से रोकी, तो दोनों प्रॉपर दोनों फुट के फुटबॉलर जरूर है, लेकिन थोड़ा झुकना पड़ेगा यहाँ पे। गेंद को रोकना है तो हाथों से रोकना पड़ेगा, बट एफर्ट पूरा 100% दे रहे वो। 2 runs added. The score moves on to 35 runs. 6 runs in this over so far. अथर्व में पहली ओवर जिन्होंने काफी अच्छी लाइन लेंथ डाली थी, इस बार वो गेंद को थोड़ा शॉर्ट डाल रहे थे। इस बार ये लास्ट बॉल तो थोड़ी सी ऑन द अप थी, लेकिन लेफ्टी के अगेंस्ट पैरों में आप अगर गेंद डालोगे इज गोइंग टू स्वीप यू। वॉच आउट फॉर द बिग शॉट। मे बी मिड विकेट के रीजन में एक बड़ा छक्का आएगा जरूर लेफ्टी के अगेंस्ट लेफ्टी। ही माइट गो फॉर अ बिग वन। देखिए शायद मिड विकेट की तरफ ये गेंद जाएगी। नो, ही प्लेस इट इनटू द कवर्स। स्मार्ट बैटिंग, ही डज नॉट वांट टू टेक चांसेस। लेकिन यही बल्लेबाज अगले मैच में अगर आ जाए उमंग, और जब सिचुएशन ऐसी कि 6 ओवर में 60 रन चाहिए तो ये बड़े सिक्सर्स भी लगाने की क्षमता रखते हैं। द स्कोर एट at the end of this over is exactly 41 runs. So right now they have got 41 runs. The equation right now what they need is exactly 67 runs needed in the 68 runs needed in the next 14 overs. I beg your pardon, 12 overs. 68 in the next 72 balls. So difference between the run and the balls is of 4. 12 overs and 68 runs. तो 4 का अंतर है रनों और गेंदों में। फील्डिंग करने वाली टीम चाहेगी कि वो अंतर बढ़ता जाए। फिलहाल तो बैटिंग करने वाली टीम के फेवर में, क्योंकि 4 रन कम बनाने गेंदों से। फील्डिंग करने वाली टीम चाहेगी कि रन ज्यादा हो जाए और गेंदे कम। बैटिंग करने वाली टीम जो अब तक चल रहा है वही जारी रखने का प्रयास करोगी जरूर। अथर्व से थोड़ी सी उम्मीद थी उनके पहली ओवर के बाद, लेकिन उनका सेकेंड ओवर उतना अच्छा रहा नहीं है। और जो कैच ड्रॉप हुआ था अथर्व के हाथों से, इनफैक्ट सेम बॉलर है। उमंग की विकेट यहाँ पर इंपॉर्टेंट। इफ दे गेट उमंग दे विल हैव सम होप। लेकिन उनकी टीम में काफी अच्छे बैट्समैन दिख रहे हैं। जैनिल तैयार दिख रहे हैं टू गो वन डाउन आई थिंक। Oh, beautiful shot. That is the shot of the match. A fantastic inside out cover drive. That has to be a super shot of the tournament. Against a very good bowler. He has stepped out, walked down the ground, in fact, danced down the ground and played it beautifully into the covers. One of the best shots in cricket. The lofted cover drive. That was indeed a classical shot. It had class, it had touch, it had superb footwork, it had all great technique, and it had some beautiful viewing. What a beautiful shot that was. The first sixer, in fact, against the spinner. He has hit 2 sixes. Oh, that has gone through his hands. That was difficult. The ball was traveling, but a difficult chance had to be converted. So 2 catches being dropped. The first one was slightly easy. This was slightly difficult because the ball was hit very hard. He's slightly closer, so the ball is traveling. You don't expect them to catch all these catches because ये सारे professionals नहीं है. These guys are playing cricket. Being an advocate, practicing law is their forte. ये सारे cricketers नहीं है professional. These guys are proper working professionals. है काफी अच्छे बड़े बड़े वकील हैं ये सारे. इनका काम वकालत का है, but they are playing cricket because it is their passion. Yash Sharma does the job, keeps the scoreboard moving. We saw a superb sixer, then a dropped chance,
then a single taken. Yeah, yeah. The first sixer which hit was a flick against the fast bowler. The second one was a beautiful one though. Both coming from different ends but the same batsman. One on the leg side, one on the off side. The lofted cover drive, very few shots can match that one. Probably a straight hit down the ground can match the beauty of a shot inside out into the covers. That was indeed a special shot. दैट इज द फर्स्ट फॉल शॉट आई वुड से एक पहला ऐसा शॉट कि जिसमें वो प्रॉपर कनेक्शन नहीं कर पाए दैट इज व्हाट इज शैडो प्रैक्टिसिंग इट उमंग के हर शॉट जो सिंगल्स और बाउंड्रीज और सिक्सेस व्हाटएवर इज हिट ही हिट विद प्रॉपर प्रेसिशन ये पहला शॉट था जिसका कनेक्शन ठीक से हुआ नहीं है oh that is class that is superb sweep shot just for one run a very good shot for just a single कई बार आप करते हैं ना लाइफ में बहुत मेहनत करते हैं लेकिन आपको उतना रिजल्ट मिलता नहीं है कभी कभी कुछ किए भी नहीं आपको पुश्तैनी जायदाद मिल जाती है कट लग के चौका मिलता है लेकिन अच्छी शॉट के लिए एक रन मिल जाता है दैट कैन ऑलवेज हैपन इन लाइफ एंड क्रिकेट यू गेट रिवॉर्डेड फॉर डूइंग नथिंग एंड एट टाइम्स यू वर्क वेरी हार्ड you don't get rewarded enough that was that kind of a shot beautiful sweep shot just for one run even Janardhan is being taken for runs now. Oh, what a catch! What a catch! Second fantastic catch. This has to be one of the best catches of the tournament. The previous one, which Ashwat took, was a brilliant one. This is even better than that one. Towards his left, the ball was dropping down. This has to be one of the best catches of the tournament. And that is the first wicket. Yash Sharma gets out, and this man can do everything. He can bat, he can bowl, but what a sensational catch by the little man. सबसे कद उनका हाइट में सबसे कम उनका कद है लेकिन जो उनका परफॉर्मेंस है वो सबसे ऊंचा हाइट पे मत जाइए कम हाइट लेकिन जबरदस्त फाइट जनार्दन फैंटास्टिक वर्क व्हाट अ कैच दैट वाज देखने वालों का दिल खुश हो गया लोग चौके छक्के देखने आएंगे क्लीन बोल्ड देखने आएंगे लेकिन ये कैचेस हमेशा याद रहते हैं फैंटास्टिक कैच टू डिसमिस द फर्स्ट विकेट 9 overs done and dusted. The score is 50-50 for the loss of one wicket. एंड व्हाट अ गुड कैच दैट वाज फ्रॉम जनार्दन जनार्दन ने जान डाल दी उस टीम में एक ऐसी टीम की जो बिल्कुल ऐसी लग रही थी कि मैच खींच के ले जाएगी उमंग और यश की जोड़ी तो पहला विकेट जरूर लिया है आपको लगेगा कि मैच तो खत्म हो चुका है काफी कम रन है लेकिन ये फाइट कर सकते हैं सी व्हाट इज द इक्वेशन राइट नाउ दे गॉट 66 balls in which they have to defend those 59 runs तो रनों और गेंदों का अंतर अब 7 हो चुका है बैटिंग टीम के फेवर में सारी चीजें जा रही है लेकिन येलो जर्सी हमेशा से ऐसी टीम रही है येलो कलर की जो मुसीबतें देता है ऑस्ट्रेलिया का कलर ले लो अब चेन्नई सुपर किंग का कलर ले लो ये जीत का रंग है येलो और येलो रंग शायद हमेशा से कुछ चमत्कार करते आए दैट वाज अ ब्यूटीफुल कैच शायद एक ऐसी कैच जो सारी टीम को इंस्पायर करे अ स्मॉल मोमेंट ऑफ इंस्पिरेशन कैन चेंज द होल गेम एक अच्छा कैच गेम को पलट के रख सकता है शायद वो मोमेंट था वो लेकिन क्वालिटी वाइज अगर देखने जाओ तो Santacru Lions seems to be a very strong team in all three departments if you compare with Bandra Sonics. I am no one to judge, but right now थोड़ा भारी दिख रहे हैं वो Sonics पर गेंदबाजी बिल्कुल अलग सी स्टाइल है एक गेंदबाज मुझे नाम उनका याद नहीं आ रहा है इंग्लैंड के गेंदबाज उनकी तरह गेंदबाजी की उनकी शैली है जिनका जो लेफ्ट हाथ है वो ऊपर आता ही नहीं है जो नॉन बॉलिंग आर्म वो वहीं पे रहता है और जो बॉलिंग आर्म है राइट आर्म वो पूरी तरह से घूम रहा है अलग सी बॉलिंग एक्शन है देखिए उनका अगर आप नॉन बॉलिंग आर्म देखोगे तो बिल्कुल नीचे रहता है
Oh, fantastic bowling. सूचक सूचक म्हणून. Oh, that's a vociferous appeal. All one, two, three, four. A team of liars coming together, and they have got Umang. Oh my God. They appealed once, twice, thrice. Lower court, high court, supreme court. Finally, the judge has given the verdict. It is clean bowled. I beg your pardon. I beg your pardon. That was wrong. Wrong on my side. The it is clean bowled. Clean bowled. It was an appeal for LBW first, and then they saw the stumps being dislodged. My bad. I just lost my concentration. I wasn't concentrating on the game. But they have got Umang, the best batsman of the. That is what I said. A great catch. One small inspiration can change the game. That one great catch. Look at the team now. Look at them being confident now. There are two words in life. One is belief and one is hope. आप सोचते आप उम्मीद करते कि आप जीतोगे तो आप नहीं जीतोगे, लेकिन अगर आपको विश्वास है कि आप जीतोगे तो आप जीतोगे. होप एंड बिलीफ. होप मतलब उम्मीद, and belief मतलब आपका विश्वास. If you believe that you can win, you are going to win this one. But if you just hope to win, it's not going to work for you. The first catch gave them hope. The second catch will give them, in fact, the second wicket we can give them belief now that they can win this one. Hope and belief, two different words, but one is much stronger. You should believe that you can win. ये कैच है जो अब उनको भरोसा देगी कि हम लोग मैच जीत सकते हैं. जो कंधे पूरी तरह से झुक गए थे, अब वो थोड़े कॉन्फिडेंट लग रहे हैं फील्डिंग टीम. Their shoulders are quite high now. The body language seems to be different. Look at the umpire. In fact, the captain, Yash, he is just orchestrating the fielding. एक कर्नल की तरह आर्मी के कर्नल की तरह अपनी फील्डिंग को सजा रहे हैं, अपने प्लेयर्स को बता रहे हैं अब कहाँ जाना है. ये तभी होता है जब आपको लगता है कि आप जीत सकते हो. देखिए अब वो यश में भी थोड़ा सा भरोसा आ चुका है कि हम लोग ये गेम में वापसी कर सकते हैं, बिकॉज उमंग को आउट करना मतलब लगभग तीन बैट्समैन को एक साथ आउट करने जैसा. उनकी टीम का विराट कोहली की तरह बैट्समैन था, वो आउट हो चुका है. No, ये शॉर्ट बॉल है. यू कांट बी बॉलिंग शॉर्ट टू अ न्यू बैट्समैन. रॉन्ग लेंथ, रॉन्ग लेंथ. अगर आपको प्रेशर बनाना है, यू नीड टू पिच द बॉल अप इन द राइट एरिया. वो शॉर्ट बॉल इतना था कि आराम से बैकफुट पर जाकर वो पंच करके सिंगल निकाल लिया उन्होंने. नीड टू बॉल वेरी क्लोज, वेरी टाइट. और थोड़े फील्डर्स जो हैं सर्कल में, उनको दे नीड टू कम एंड स्टॉप दो सिंगल्स. दे आर स्लाइटली अवे राइट नाउ. एक पॉइंट पर है, एक शॉर्ट कवर पे, एक शॉर्ट मिड विकेट पे है, और एक प्लेयर है शॉर्ट थर्ड मैन पर. सो तीन चार फील्डर जो सर्कल में है वो थोड़े दूर लग रहे हैं मेरे हिसाब से. दे नीड टू बी स्लाइटली क्लोज. आउटफील्ड जो ऑफ साइड में काफी हैवी है, सो चौका उतनी अच्छी से जल्दी से जाएगा नहीं. दे नीड टू कम अ लिटिल क्लोजर, स्टॉप दो सिंगल्स फ्रॉम गोइंग ओवर. सो टू न्यू बैट्समैन, it's going to be a challenge now. No, that is smart batting, super batting, good fielding, super work by the fielder. But again, I'm saying the same thing again. They need to have one more fielder coming in. अगर उन्होंने चौका मार दिया, it's fine. But stop those singles, create that pressure. ये अगर ये मैच उनको जीतना है, सिंगल्स आ गए चार मैच इस ओवर में तो भी आराम से जीत जाएंगे. यूल गेट एन एक्स्ट्रा, यूल गेट अ बाउंड्री बॉल. हर ओवर में चार पांच रन चाहिए, उतने आराम से कर सकते हो. दे नीड टू स्टॉप दो सिंगल्स. चार फील्डर से शायद पांचवा भी सर्कल में आ सकता है. शॉर्ट बॉल अगेन, नॉट गुड बॉलिंग. दैट इज स्मार्ट बैटिंग, आई वुड से नॉट ग्रेट बॉलिंग. पहले जो तीन गेंदें जैसे डाली थी उमंग को, विकेट कौन सी गेंद पर मिला कि जब वो गेंद आगे पिच की गई. स्कोर एट द एंड ऑफ दिस ओवर इज, तो आधे रन हो चुके हैं, आधे ओवर्स हो चुके हैं, आधे ओवर्स बाकी और आधे रन ही बनाने. 109 का टारगेट, 108 को अगर दो भाग में करोगे तो 54 54. 10 ओवर में 54 हो गए. आगे 10 ओवर में पिच 55 चाहिए. 54, दो विकेट.
आता चालू केलं. येस. सो MAPL सीजन 1, ये जो येलो टीम की ब्यूटीफुल जर्सीज है या अच्छा सा ग्राउंड है, ये अंपायर्स है, जब आप खेलते हैं तो कई घर भी उसके साथ चलते हैं। जब आप टूर्नामेंट खेलते हैं तो इसमें कैमरामैन होता है, उसमें ब्रॉडकास्टर्स होते हैं, जो कैमरा को स्विच करने वाले लोग होते हैं, टेक्नीशियंस होते हैं, ग्राउंड्समैन होते हैं, स्कोरर्स होते हैं, कमेंटेटर्स होते हैं, केटरिंग वाले लोग होते हैं। तो आप लोग खेलते हैं तो कई घर भी उसके साथ चलते हैं। इट्स अ बिग बिजनेस राइट नाउ क्रिकेट। लेकिन ये सारे लोगों के घर भी उसके साथ चलते हैं। किसी जो कैमरामैन है वो अपनी उसी पैसों से अपने भाई की फीस भर देगा, या किसी के घर का खर्चा निकल रहा है, किसी का इलेक्ट्रिसिटी बिल निकल आता है। तो आप लोग जब खेलते होते हैं तो उसके साथ कई घर भी चलते हैं। एंड इस टूर्नामेंट के स्पॉन्सरशिप, जो लोग इनको स्पॉन्सर करते हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो वंस अगेन टाइम टू थैंक ऑल द स्पॉन्सर्स, MAPL sponsors. This tournament is proudly sponsored by ProVakil, Tata Capitals, Royal Enfield, Voyage Motors, Digi Legal, Total Sports, Royal Trading, Image, Design Studio, Fasten Up Sula, डॉक्टर वल्लरी सूचकार, फिजियो टीम। ये जो सारे तीनों वेन्यूज पे जो उन्होंने अपने फिजियोज बेचे हैं, थैंक यू सो मच। ऑल्सो वी हैड the young representative from Pro Vakil who was there from the first ball. Also, we have Mukul Shotri sir, who is the CEO of Royal Enfield Voyage Motors. He was here and he's a keen observer. He's there with us. So Mukul Shotri, Royal Enfield Voyage Motors, the three of our chief sponsors who have been a part of this wonderful tournament and initiative and tournament for the advocates. This has been played in pan India. There is a match which is being happening in Ahmedabad. Some matches are being happening in MP. Some are happening in Goa. It is a pan India tournament where all these tournaments are coordinated. So they are going to play a mega event when it comes finally. So all the advocates, they are playing a tournament where which will have a mega winner at the end of this season. Right now, the first match, the Santacru Lions are right on top of it. But one team which is trying to come back is the team in yellow. After the first half, the last 10 overs are going to matter. They need 55 in the next 60. तर शेवटच्या 10 चेंडून 10 षटकांमध्ये 55 धावांची गरज. अतिशय अप्रतिम क्षेत्ररक्षण. या सामन्यात जर पुन्हा त्यांना यायचं असेल तर चांगलं क्षेत्ररक्षण करावंच लागेल. आणि समीकरण काय बनते बघा, 59 चेंडू आणि 55 धावा. 59 चेंडू 55 धावा. सांताक्रूज लायन्स वर्सेस बँड्रा सॉनिक्स. सुरेख गोलंदाजी. हा चेंडू पुन्हा एकदा चांगला. जनार्दन पण थांबू शकणार नाही. चेंडूला अप्रतिम फटका. ताकद लावलेली नाही, जोर लावलेला नाहीये, खूप भरपूर जोरात मारलेला नाहीये. अगदी सुंदर प्रकारे चेंडूसाठी थांबले. अगदीच हलक्या हाताने, एखाद्या लहान बाळाच्या डोक्यावर जशी टपली मारतात, हलक्या हाताने तो चेंडू खेळला आणि चेंडूला दिशा दिली फक्त. अप्रतिम फलंदाजी. या 4 धावांनी संघाची धावसंख्या पुढे सरकेल, जाऊन पोहोचेल ती आता 58 वर. संघाला जिंकण्यासाठी धावा हव्यात त्या आता फक्त 51. अप्रतिम फलंदाजी. चेंडूची वाट पाहिली, टर्न व्हायला दिला आणि हलक्या हाताने अगदी एखाद्या कलाकारासारखा तो चेंडू त्या दिशेने फक्त ढकलला त्याने. अप्रतिम फलंदाजी. डावखुरा हाताचा गोलंदाज अथर्वा. चेंडू चांगला होता मात्र अप्रतिम. सुरेख गोलंदाजी, सुपर बॉलिंग. म्हणून सांगितलं पहिला चौकार आला तरी चेंडू पुढे टाकायला हवा. पहिल्या षटकात जशी गोल ऍब्सोल्युटली मिडल आणि ऑफला चेंडू जाऊन तो आदळला असता, स्टंप्स तोडून टाकले असते. फलंदाज खुश नाहीये, परंतु गोलंदाजी अप्रतिम उच्च दर्जाची होती. तो क्लीन प्लम्प LBW वाटत होता. चेंडू खाली राहिला आणि एक चांगला फलंदाज, एक असा फलंदाज ज्यांनी अप्रतिम फटका खेळला, जो खूप ज्यांचा प्रीमियर फलंदाज आहे, चांगला फलंदाज आहे, तो बाद होऊन आपल्या तंबूत परत. तिसरा विकेट जातोय आणि महत्वाचं म्हणजे हे दोन फलंदाज जैनिल आणि उमंग शेठ, हे त्यांचे दोन प्रॉपर बॅट्समन आहेत, ते मात्र माघारी परत आहेत. पुन्हा एकदा आर्म बॉल टाकला होता. पहिला चेंडू फ्लाईट केल्यानंतर हा टाकलेला आर्म बॉल.
51 धावांची गरज आहे. 51 रन्स मोर नीडेड. 51 रनों की दरकार. 3 विकेट जा चुके, अगर और 2 विकेट्स आ जाए तो मैच में और ज्यादा मजा आ जाएगा. ये लो स्कोरिंग मैचेस आपको बहुत एंटरटेनमेंट देते हैं. ये शायद गेंदबाज और एक विकेट निकाल सकते हैं, मे बी 2 विकेट्स बैक टू बैक. बट ये चिन्मय अच्छे बल्लेबाज है, इज अ वेरी गुड बैटर. देखिए प्रेशर आएगा. अब ये अच्छा है, देखिए फील्डर्स देखिए सर्कल में कौन कौन है. 1 2 3 4, चारों के चारों फील्डर्स ऑन दी ऑफ साइड. ये अच्छी फील्डिंग है. लेग साइड उन्होंने पूरा खोल दिया है, वहां पर आप सिंगल निकालने के लिए दे दिया है चांस. लेकिन वहीं पे आपको एलबीडब्ल्यू मिलेगा अगर बैट्समैन उस गेंद को अक्रॉस द लाइन खेलने जाएगा. लेदर बॉल क्रिकेट, टेनिस बॉल क्रिकेट में काफी अंतर है. यहाँ पर अगर आपको गेंद पैरों में लग जाती है तो आपको एलबीडब्ल्यू के कैंडिडेट बन जाते हो. बिकॉज लेदर बॉल क्रिकेट और टेनिस बॉल क्रिकेट में एक मेजर डिफरेंस है कि टेनिस बॉल एक्स्ट्रा बाउंस होता है. लेदर बॉल अगर आपको विकेटों के सामने गिरेगा तो इट्स गोइंग टू गो एंड हिट द स्टंप्स मोस्ट ऑफ द टाइम्स. फैंटास्टिक ओवर सो फार. एक चौका लगने के बाद एक विकेट जैनिल का. That is beautifully bowled. Good flight, but what a shot! That will run away for a boundary, I think. No, there is protection. In fact, it has gone through. He covered it. He had it all covered, but he let that one go through. 2 boundaries and a wicket in this over. The score is 63 for the loss of 2 wickets. So 63 for 2 now. 63 runs हो चुके हैं, 2 wickets. In fact, 3 wickets. What does the equation say now? 46 needed in the next 54 balls. So, so 9 overs and 47 runs. I'll just correct myself. 62 runs हो चुके हैं, 47 runs चाहिए. इक्वेशन क्या कहेगा? 54 balls, 47 runs. Oh, that is beautifully bowled. The quicker one. It's not always the bowler or the ball which he bowls. The situation is the most important factor. Right now, it's a very delicate situation for the Santacru Lions. Chance. In fact, that will run away for a boundary. No one's going to stop that one. They got 3 scoring shots in the last 9 balls, all 3 boundaries. But that was a class hit. So very well played. They need 43. That is a telling blow. They have 2 pretty good batsmen over there, and I think Santa Cruz Lions are going to win this one easily. If this guy stays for next 3 4 overs, these guys are going to finish it in the next 6 overs. So that's again a boundary. No one's going to stop this one either. That will run away for 2 back-to-back boundaries. That will take away all the pressure which was created. First one was a ball outside the off stump, overpitched one. This one was a full toss. That was a gift ball. This was a gift after the Diwali and before Christmas. There is a scheme in Maharashtra, Ladki Bahin Yojana. That was Ladka Bhau Yojana. A gift given for the batter. 2 back-to-back boundaries has taken the score to 70 now. They just need 39 more. Watch out for the third boundary of the over. खून लग गया इस बैट्समैन की. Yes, another single. 38 more needed now. Equation has simplified with those 2 boundaries. All that pressure which was created in the last 2 3 overs has been taken away. The 2 boundaries in this over, the 2 boundaries in the previous over has fizzled out all the pressure which was created. 38 रन चाहिए अब. On the leg side, it was missing in fact another set of stumps. बहुत ज्यादा टर्न हो गई थी गेंद, तो शायद और एक सेट स्टंप्स के मिस करके निकल जाती. 38 रन चाहिए. 2 चौके ऑलरेडी इस ओवर में आ चुके हैं, 9 रन आ चुके हैं, तो चिन्मय चांस नहीं लेंगे.
वेरी वेल बोल्ड। पहली गेंद जबरदस्त, आखिर की दो गेंदें जबरदस्त, बीच की दो गेंदें बिल्कुल ही साधारण जिसमें दो चौके आए। 38 रन नीडेड इन द 8 ओवर्स, 48 बॉल्स 38 रन। रनों और गेंदों का अंतर 10 का फिलहाल तो बैटिंग टीम के फेवर में है। शायद सांताक्रूज लायंस अपना पहला मैच जीते, लेकिन बैंड्रा सोनिक्स क्या वो चमत्कार करेंगे? लेट्स वेट एंड वॉच। 12 overs, 71 runs for the loss of 3 wickets. Equation says they need exactly 38 in the next 48 balls. 38 needed in the next 48 balls. They need some magic. So four fielders on the offside in the circle. They have a cover, the extra cover. You have a point, and they have a short third man. Four fielders in the ring on the offside. Nobody in the leg side. We have deep square leg. We have deep mid wicket. We also have a cow corner being placed. Three fielders on the leg side on the boundary. Oh, leg spinner coming in. Oh, that's beautiful. That's class. That will run away for a boundary. No one's going to stop a shot like that. That's a beautiful hit. That is one of the best shots by the batter. No, I would not say for the match because that wonderful inside out cover drive dancing down the ground from Umang was one of the shots to remember. Just 34 needed. A leg spinner can give you a lot of wickets, but they can be expensive. Leg spinners से आपको run मिलेंगे, लेकिन आप विकेट भी खो सकते हैं. Leg spinners can always do that. Watch out for a wicket ball. देखिए मैं यही कह रहा था. Oh my God! How can you drop that? How can you drop that? They have missed three chances. That was the easiest of them. That is what I was saying. लेग स्पिनर्स आपको लगेगा एकदम कि जिसमें आप रन बना सकते हो, लेकिन लेग स्पिनर्स ही सबसे ज्यादा विकेट निकाल के दे सकते हैं. एडम जैम्पा इंडिया के अगेंस्ट कितने सक्सेसफुल हुए. इंडिया में बहुत पिटाई होती है उनके अगेंस्ट, लेकिन वो सबसे ज्यादा विकेट्स भी निकालते हैं. एक मैच में तो उन्होंने 5 विकेट्स निकाल के अपने तो मैच रहे थे. और सबसे अच्छी टीम है इंडिया स्पिनर्स के खिलाफ पूरी दुनिया में मानी जाती है. इवन वो भी विकेट्स खोते हैं. लेग स्पिनर के अगेंस्ट आप, देयर इज ऑलवेज दैट ऑप्शन ऑफ गेटिंग आउट और गेटिंग अ लॉट ऑफ रन्स. दे विल ऑलवेज गिव. इसमें देखिए इस ओवर में आपको शॉर्ट बॉल भी मिलेगा, फुल टॉस भी मिलेगा और विकेट का भी बॉल मिलेगा. फुल टॉस आ सकता है अभी. Oh, that is a beautiful shot. That would be, oh, that's a very big shot. Few runs. He did not score a boundary. He hits a sixer instead. He might go up for a boundary again. Maybe on the fine leg region. No, he hits it into the covers. And once you get that first shot from out of your books, everything else follows. So Mukul is here. Mukul Shodri, Chinmai's uncle, I suppose, and he's happy with that shot. Always good to see your near ones playing well. Oh, that is so nicely played. It is always said Rahul Dravid's father used to be on ground, and but he never used to tell that he was on ground. 2 runs added. शुभमन गिल के बारे में भी स्टोरी है. शुभमन गिल जो आज शॉर्ट बॉल्स अच्छे खेल रहा है, उनके पिताजी ने हजारों लाखों गेंदे शॉर्ट पिच बॉल उनको बॉलिंग से प्रैक्टिस कराई है. दैट इज व्हाई ही इज बीइंग सक्सेसफुल. वो आराम से शॉर्ट बॉल खेल लेते हैं. दैट इज बिकॉज ऑफ हिज फादर. तो पेरेंट्स का कंट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है. उनके पिताजी ने लाखों ड्रिल्स दिए होंगे शॉर्ट बॉल से. आफ्टर दैट इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स ऑफ द शॉर्ट बॉल. कि वो सबसे बड़ी टीम के कैप्टन बन चुके हैं. दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ हिज डैड. स्कोर 85 runs, 14 runs in that over with that wonderful six hit. 85 runs on the scorecard. They need 34 more. In fact, 24 more to win this one.
Oh, that is beautiful bowling. His first over was a brilliant one, second over was an ordinary one, the third over was always again a brilliant one. This man has bowled really well. Second over wasn't that great, where he was taken for a couple of boundaries, but the third over was brilliant where he took that important wicket. He might take one more in this over. Watch out for the armor coming in. Oh, that is a class hit. That's a superb sweep shot. That's indeed a shot that will give him a lot of confidence. A sixer followed by a boundary. That was very well played. Sweep shot. You look at this shot which he played. That was a ball on good length, and you can play the sweep shot against these balls. So these are the options against a spinner which you play: a sweep shot, a paddle shot, a ramp shot, a reverse shot, inside out cover drive, maybe a shot into the mid wicket. But this shot, generally the English players used to play a lot against the Indian spinners. They never knew which side the ball is going to turn, so the sweep shot was their option. If you find one of the best players right now playing sweep shot is Duckett from England. He plays sweep shot so well. That is wonderfully bowled. Super bowling. You can almost see the ball in the air and you can imagine how good that ball was. Again, right line, right length. He might bowl a quicker one. Watch out for the quicker one. Watch out for that LBW call, Chinmay. But he can play the sweep shot well, so you might not be in trouble. Oh, beautifully bowled. Very well played again. A good quality cricket. No, nice bowling and good footwork of going on the back foot and hitting the ball into the covers. Footwork का मतलब सिर्फ नीचे आकर शॉट्स लगाना नहीं है, आपको शफल कैसे करते हो, बैक फुट पे फ्रंट फुट पे कैसे आते हो. That is all good fancy footwork. Mumbai Advocates Premier League Season 1 match number 1. The venue is Chereshwar Cricket Ground, Trombe, Koliwada. White ball. Oh, that is beautifully bowled. And good call of no. Very good call of no, because it would have been a catastrophic end if they had gone for a single. That's nice judgment of a run. He might go for a sweep shot again, I think. That's nicely bowled. Janardhan, he's a live wire. Probably the best fielder on both sides. 94 runs on the scorecard. They just need 15 runs to win this one now. That's an easy job now. We started off quite late. In fact, we are 1 hour behind schedule, but that will help to save at least 20 minutes of our schedule time. So we'll have the second match right after this one. So we have Sahil and Vinith in our broadcasting team. Sahil is the man who's taking all those pictures. Vinith is the one behind the computer, giving all the scores being updated, all pictures that scoreboard being updated. Also, we have Aaron in our team along with Sashank, and we also have a physio, young physio, who is working and jumping up and down. Also, we have our two volunteers, two volunteers, Atul and Atul and Vivek. So Atul, Vivek, Vinith, Sahil are the young men who are working for this. ये देखिए जब टूर्नामेंट होता है तो ये सारे लोग हेल्प करने के लिए आपके लिए हो जाते हैं. Aaron is here to manage things. Shashank is there to coordinate. And we also have Sahil and Vinith in our broadcasting team. Vinith और Sahil. Vinith मैं आपको बता दूं ये सारे जो लोग JFS से जुड़े हैं, all these young people are working and studying also together. So जो विनीत हमारे broadcasting technician here right now, he is also a college student doing his studies, helping his family. Also we have a photographer who is working with us, and he's giving those live pictures from shutter for sports or something. And they have a good strong team. We also to have umpires from JFSC.
So MAPL is being powered by JFSC. This is brought exclusively organized by JFSC. They are the ones who are getting those logistics, getting all those arrangements done for you, those live broadcasting, the umpires are taking care of all the apparels. So JFSC, a top brand in sports management. They have 4, 5 venues, multiple venues. People, it's difficult to manage one venue. These guys can manage 5, 6 venues at a time. One in Navi Mumbai, one in Uran, one in Khalsa, one in Fatima, the JFSC ground, one in Chereshwar over here. MIG is another venue. 6, 7 venues. Also, they handle matches in Lonavala. Today, I think 6 venues or 5 venues they are working at a time. Oh, that's a big one. That's going to go all the way. It is going to be a sixer. That wasn't a great shot. I would not say it is one of the best shots. It's a short ball. It was very high, but it was dealt with it what it deserved. It was a short ball, deserved to be hit for a sixer. It wasn't off the middle of the bat. अगर वो और अच्छा connection हो शायद that would have gone sailing over the roof over there. But nevertheless, a sixer, and this breeze is going to help him. Now it is a time of the day where you are going to see a lot of boundaries and sixes. Almost when you run your Royal Enfield on a highway, we also, oh, that's another good shot. That is again going to run away for a couple of runs minimum. Janardhan, look at him running away for that ball. Superb to watch. ये गलत फील्ड में आ गया बंदा. Super fielder Janardhan. So Janardhan, if he's working with a senior lawyer in a Supreme Court or something, he would love to have him because he would be very quick with all those aids of his. 100 up for this team. They are getting closer now. Watch out for a big sixer. So he went for it. They won't get a sixer. I think that is off the bat now. The ball has stopped over there. It's almost like the train getting struck between Kurla and Tilaknagar. Couple of runs added. Off the bat, 102 runs. Good call by the umpire. That was an underage. 7 needed now. 7 needed. He wants to finish off early. He wants to go and have that dosa which is being prepared for him. Oh, what a shot! Up and over into the covers. The outfield is very heavy, but the shot is heavier than that. In fact, the fielder gets his big foot down. That is the third ball which he has stopped with his foot. First, it was the right foot, then it was the left foot. Now he comes in and stops the ball in the mid wicket region with a big foot coming down in right time. Couple of runs added, one hit away they are now. Just 5 runs needed. Santosh, na? Oh, that is good to see somebody of a name of Santosh. I am Santosh myself. It's a rare name now. It was a very common name of 80s and 90s. Right now, we don't get to hear names like this. Even the 90s names are over. Sahil, Shubham, and all those get over now. We have very different names now, the of the millenniums, which are quite different. But this were the names of 80s and the 90s, Santosh and all. Santosh, Ramesh, Ashok. They are almost extinct now. People don't keep names like that right now. And Shubham, Sahil and all also they were vanished after the early 2000. They have different Sanskrit names coming up for the Gen Zs now. But right now, Santosh ने बहुत संतोष दिया है. He has given them immense satisfaction. He has played beautifully. Oh, under edge, the ball will run away for a boundary. Scores are level, I think. Scores are level. One needed, one needed. And that wasn't of the middle of the bat. लेकिन रन और पैसा जैसे भी आए बटोर लो. 4 runs. Some good fortune for Santosh. Will he finish like MS Dhoni? He will try and hit the ball down the ground, I think. यहाँ पे fielders सारे ready हो जाओ. Maybe the ball would be coming in your direction. Maybe mid wicket cow corner, maybe down the ground, boundary or a sixer. He goes into the covers instead. One bounce, two bounce. The ball will run away into the covers. A brilliant end. He finishes off in style. And Santosh, it started with the boundary of the first ball. In fact, couple of runs of the first ball. It has ended with a shot into the covers. And congratulations to Santacru Lions. But kudos to the Bandra Sonics. They fought really hard with that smallish total. They took some brilliant catches. They dropped a few catches. But Atharva, Janardhan, and Yash, they fought
in this match. They were competitive for some part of time where they considered just 55 runs, 54 in the first 10 overs. But after that, they just lost their way because Santosh, Chinmay, and Umang initially batted really well. चला जेवून घ्या. नाही नाही, ते सगळं आता झालं आयुष्यभर तेच करत आले. स्क्रीनवर जायची आवड नाही आपल्याला. जरा काहीतरी क्रिएटिव्ह करा. नको रे ते सगळं ते मोठ्या टुर्नामेंटला करायचं. जेवढे पैसे भेटतात तेवढंच करायचं. ऍक्च्युली जास्त देतोय मी काम. तेवढं करू काय त्या हिशोबाने जो बजेट असतो ना त्या हिशोबानेच बोलायचं असतं. पण जाऊ दे आपल्याला तशी सवय नाही. त्यांनी आहे ना पार्थिव माझ्याकडून एक इंटरनॅशनल करून घेतलं टुर्नामेंट. हरेश पांड्या, प्रसन्न, IPL चे कॉमेंटेटर. त्याला भेटलो मी प्रसन्न सर. हा त्यांच्या आपण पण चांगली केली तेवढीच केली. यांच्या एवढीच का चांगली केली. त्यांचं पेमेंट आपल्यापेक्षा किंमत गेलं. मला सांगितलं नाही तुम्ही की बेल्जियम आणि हाँगकाँगची आहे. मला फक्त बोलतो 2 T20 डायमंड आलते हा 5 माझ्याकडून काम करून घेतलं. मागच्या आठवड्यात पण निघालेली. मला माहित तू काय करतो लीगला होतो ना. हा पण टुर्नामेंट डेट सांगत नाही तो कुठली आहे. फक्त सांगतो टुर्नामेंट आहे भाई ऐसा ऐसा आहे. शेड्यूल पण सांगत नाही. खूप हुशार आहे फार. तशी असते मी त्याला बोललो बहुत कम था मी येणारच नव्हतो. याने सोसायटी प्रीमियर लीगला वाट लावली ना माझी. 1 लाखाचं काम आम्ही त्याला डन केलेलं आणि या लोकांनी काय केलं आमचं थ्रू करा आणि अर्धा 50% खात्या घेतली. माझी भांडणं झाली तुम्हाला मी देतो ना सबसिडी मध्ये मला द्या. PS पाठक घेऊन गेला मी. तेच काम तुम्ही 1 लाख 80,000